गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। अरे बढ़िया, सब लोग टाइम पे आ गई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, या गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, सो या द ऑडियो एंड वीडियो फाइन? प्लीज कंफर्म, इज द ऑडियो एंड वीडियो फाइन to all of you? Good evening everyone, come on, join the class quickly. So please type in the chat box, is the audio and video fine to all of you? Clear? Okay, so फटाफट हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2 और बेसिकली दिस इज अगेन वन शॉट लेक्चर बेसिकली ऑन टर्बाइंस। लेकिन मुझे मतलब गारंटी नहीं है कि मैं टर्बाइंस खत्म कर सकता हूँ इस वीडियो में, लेकिन बिल्कुल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो पेल्टन व्हील तक चलेंगे। नाउ लेट्स सी ऑफ कोर्स रिव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर। सो सीधा स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिव्यू दे देंगे। सो इन लास्ट क्लास हमने टर्बो मशीन का डेफिनेशन पढ़ाया और उसके बाद we have also seen the most important Reynolds transport theorem. Reynolds transport theorem. Of course, I did not do the derivation, but normally I have just given you some idea. Okay, so मान लो कि आपके पास एक कंट्रोल वॉल्यूम है और इसमें सिस्टम है। तो सिस्टम इज सेट ऑफ पार्टिकल्स, करेक्ट? यू फिक्स दिस पार्टिकल्स बाय नेम, सो दिस इज सेट ऑफ पार्टिकल्स, सो दिस इज योर सिस्टम and this is your control volume actually here. Okay, so this is control volume. Then dB by dt for any quantity b, so हमने देखा था लास्ट क्लास में। so for any quantity b extensive of course, so this is any quantity b, हमने लिखा कि dB by dt of the system is equal to rate of change of quantity of the control volume plus integral over the control surface. So ये होता है कि control surface आपकी, so this is control surface, ये पूरा जो होता है ये होगा control surface. So over the control surface beta times rho v dot n cap ds और da, some people are happy with ये, but मैंने एक चीज कहा था लास्ट टाइम, एक्चुअली यहाँ जो वेलोसिटी होता है ये रिलेटिव वेलोसिटी होता है। ओके, सो कभी कभी ऐसा होता है कि कंट्रोल वॉल्यूम भी जा सकते हैं। सो इसलिए सर कल थी सर मैं पूरा कॉन्सेप्ट हिला दिया था तुम्हारा, लाइक हिला दिया मतलब इट्स गुड राइट? आई थिंक सो, फाइन, बिकॉज दिस द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग दिस टर्मिनोलॉजी, हिला दिया। ओके, बढ़िया। सो लेट्स सी, दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी हैव रिटन एंड बीटा जो होता है, सो बीटा इज बी पर यूनिट मास। ओके, सो 1 kg मास के लिए कितना वैल्यू ऑफ बीटा होगा, वो होता है कि बीटा ऑफ कोर्स। ओके, सो डीबी बाई डी टी ऑफ द सिस्टम एंड नॉर्मली यहाँ जो वेलोसिटी होता है ये रिलेटिव वेलोसिटी होता है, क्योंकि कभी कभी कंट्रोल वॉल्यूम भी जा सकते हैं सर्टेन वेलोसिटी से। सो इसलिए फ्लूइड वेलोसिटी और कंट्रोल वॉल्यूम वेलोसिटी के जो रिलेटिव मीन्स एक्सीलेंट। ओके फाइन, सो दिस इज व्हाट यू हैव। एंड लास्ट क्लास में मैंने कैपिटल बी इज इक्वल टू एम मास ऑफ कोर्स लेके हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन डेराइव किया था। इससे डेरिवेशन नहीं, मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बस, कंटिन्यूटी इक्वेशन। और दूसरा चीज मैंने ये पढ़ा कि B इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम। सो मान लो कि आपने लीनियर मोमेंटम लिया था, सो दिस गिव्स यू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऑफ कोर्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और मैंने एक और चीज पढ़ाया, लाइक इफ यू हैव a plate, sigma f on plate by fluid is equal to summation m dot v out at the outlets minus summation m dot v inlet, in minus out or out minus in. So एक बार खत्म कीजिए। So sigma f acting on the fluid is equal to, so this is minus and this is plus, correct? So this is the equation I have shown you. Then हमने different directions में calculate किया था in x direction. Okay, it just we have seen sigma fx on plate by fluid is equal to summation m dot v in, this product at all the inlets, minus summation m dot v out
at x at all the outlets also, correct? So this is what in minus out, correct? Obviously it's in minus out because on the plate, so negative of on the fluid, so fluid momentum change is equal to out minus in, so ultimately this is what in minus out is what you get, correct? यहां तक सबके नोट्स में है या नहीं बता दीजिए जल्दी। तो यहां तक मैंने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने थोड़ा सा एग्जांपल्स भी देखा था, एक प्लेट है, एक प्लेट इंक्लाइंड है, वाटर जेट इंपैक्ट का है, सो वी हैव डन ऑल दिस एनालिसिस Q1 by Q2 1 plus cos theta 1 minus cos theta, सम थिंग्स वी हैव डन, ओके। सो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सो विल आज प्लेट को भगाएंगे, ठीक है? सो विल मूव द प्लेट एंड ऑल्सो उसके बाद एंगुलर मोमेंटम पढ़ाएंगे, बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो होता है टर्बाइन्स के अनुसार, लाइक मान लो कि आपने थोड़ा सा एनालिसिस करे उस टाइम पे जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज आता है वो टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ाएंगे। डायमेंशनल एनालिसिस ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज होगा। थैंक यू पिंटू। सो वेलोसिटी ट्रायंगल, सो वेलोसिटी ट्रायंगल्स में क्या होता है, सो मैथमेटिकली मान लो कि आपके पास वेलोसिटीज है, एंगल्स है, सो उस वेलोसिटीज एंगल्स ये सबको कैसे एनालाइज करना, सो वो हम सीखेंगे इस वेलोसिटी ट्रायंगल्स में। और पेल्टन व्हील इज बेसिकली इंपल्स टर्बाइन, सो हम पेल्टन व्हील के बारे में भी पढ़ाएंगे थोड़ा सा, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा चेक करना चाहता हूं, ठीक है? कैसे चेक करना है, मैं थोड़ा क्वेश्चंस लाया, एक अच्छा क्वेश्चंस लाया था, ठीक है? एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो सब लोग। ए लिक्विड जेट वीजे ऑफ डायमीटर डीजे, सो हमारे पास एक लिक्विड जेट है, सो इस लिक्विड जेट का डायमीटर डी जे, डायमीटर ऑफ द जेट, और ये जेट जाए कितना स्पीड से, वेलोसिटी vj, सो vj स्पीड से जाए, ठीक है? स्ट्राइक्स ए फिक्स्ड कोन एंड डिफ्लेक्ट्स बैक एज ए कोनिकल शीट एट द सेम वेलोसिटी एज शोन इन द फिगर बिलो। सो यहां क्या होता है, सो फ्लूइड इज गोइंग इन द सेंटर, देन आफ्टर हिटिंग द कोन दिस 360 डिग्री सरफेस वॉट एवर यू हैव, ओके, ये जो सरफेस होता है, तो इस पूरा सरफेस से बाहर एक शीट जैसे आए वाटर, ओके। देन द एक्सप्रेशन फॉर विस्टेनिंग फोर्स में बी गिवन एज F इज इक्वल टू 3/2 रो AJ VJ स्क्वायर। सो जब फ्लूइड जाके इंपैक्ट कर सकते हैं, अल्टीमेटली ये कोन इस तरफ जाएंगे, है ना? यस और नो? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। When this water go and hit the cone, then ultimately क्या हो जाएगा, इस कोन इस तरफ जाएगा, जाने की कोशिश करते हैं एटलीस्ट, करेक्ट? सो अब हम इस कोन को रेस्ट्रिक्ट करना है, तो मतलब मान लो कि इस कोन नहीं जाना है यहां से, सो हम जरूर थोड़ा सा रिस्ट्रेनिंग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट? व्हेन दिस जेट इज इंपैक्टिंग, इफ दिस कोन इज ट्राइंग टू मूव राइट हैंड साइड, हम एक रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स अप्लाई करके कोन को वही आएगा, ठीक है? सो दिस इज F, दिस इज रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स। सो मान लो कि इस F का मैग्नीट्यूड 3/2 रो AJ VJ स्क्वायर, द कोन एंगल थीटा, मतलब इस एंगल, this is actually semicone angle, so just write this semicone angle theta, the semicone angle theta is dash degrees। चलो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन, मैंने टाइम भी देता हूं आपको। so कितना टाइम, मैक्सिमम 2 minutes is enough if you understand, okay? 150 seconds you take, no issue। अरे बोल काम नहीं कर भाई, ओके फाइन, 150 इंटीजर टाइप स्टार्ट। चलो एंटर कीजिए आंसर सॉल्व करके। कौन फिक्स्ड है, ठीक है? सो फिक्स्ड प्लेट काइंड ऑफ थिंग यू कैन सी। गुड इवनिंग विनय, आलोक, ऑल ऑफ यू। चलो सॉल्व कीजिए, अगर इस क्वेश्चन आपको याद है तो देन डेफिनेटली डू इट। इस क्वेश्चन मैंने फ्रैंक एंड वाइट से उड़ा मतलब लिया था, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है फ्रैंक एंड वाइट में, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? कभी कभी मेरा हैंड राइटिंग इतना पैथेटिक होता है, सेमी कोन एंगल, ठीक है? गुड इवनिंग केदारनाथ सिंह। चलो गाइस जल्दी कर लो, सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है। या सिपन अटेंड कर लो,
समझने की कोशिश कर लो, ठीक है? उतना मुश्किल नहीं होगा पक्का। चलिए डन, आंसर एंटर किया आप सबने? फाइन फाइन, सो ठीक है, पोल ऑटोमेटिकली लैंड हो जाएगा। लेट्स सी दिस। सो आप आपके पास कौन है, ठीक है? सो द वॉल्यूम विल द फ्लूइड एंड सॉलिड गेट इंटरेक्टेड इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द कोन, है ना? सो मान लो कि मैंने एक कंट्रोल वॉल्यूम लेना चाहता है। सो किस वॉल्यूम में लेता हूं? पक्का ये वॉल्यूम लेता हूं, क्योंकि इसी वॉल्यूम में फ्लूइड और सॉलिड का इंटरेक्शन हो रहा है, करेक्ट? अब देखिए सॉल्यूशन, एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, सो नॉर्मल क्लासिकल एक्स वाई डायरेक्शंस, बढ़िया है। दिस एफ इज अप्लाइड इन द रिवर्स डायरेक्शन, करेक्ट? कैन आई से, आई थिंक अब देखिए, force F, whatever you applied, this force is restraining force. So F is equal to minus of force exerted on cone by fluid in x direction. Correct? ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? बताओ। Whatever the force fluid is exerting on the cone in the right hand side in the x direction, basically उतना force आप opposite direction में exert करना पड़ेगा अगर कोन को स्टेशनरी रखने तो, करेक्ट? यस, विल यू ऑल एग्री विद दिस? बिकॉज बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड इज सेम ऑफ कोर्स, करेक्ट? ऐसा हो? एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स। मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या या नहीं? F is equal to, F is the restricting force, so F should be same as minus of the force acting by the water on the cone, of course, correct? Now इसको हम लिखेंगे कि minus force on cone by fluid is nothing but minus force on fluid by cone in the x direction, correct? क्यों? Because ये जो होता है इसका exactly minus ये होगा, correct? So that's why there is a minus sign. So minus of minus is plus. So ultimately F is equal to force acting on fluid by cone in the x direction, ठीक है? So बढ़िया। Now both these are in the same direction, everything is same. Now let's see if this implies F is equal to force acting on fluid by cone is nothing but momentum change of the fluid V. This is on fluid directly, so V out in the x direction minus summation m dot V in the x direction, correct? ये होगा पक्का। Yes or no? Please type in the chat box. Yes. So all of you please type it in the chat box. Is this clear to all of you? Because the direct rate of momentum change on fluid, the rate of the force exerted on the fluid is equal to change of momentum of the fluid, of course, correct? Now let's see. This implies F is equal to, now outlets कितने जगह पे है? ये सारे जगह पे है, करेक्ट? ये सारा जगह पे outlets है actually, of course. ये सारे जगह पे outlets है. So can I say sum of all those points is nothing but m dot into हर एक पॉइंट में फ्लूइड ऐसे बाहर आ रहे, करेक्ट? अब मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? एनी आइडिया? व्हाट इज दिस एंगल? व्हाट इज दिस एंगल? हर एक पॉइंट पे फ्लूइड टैंजेंशियली बाहर आते हैं, करेक्ट? सो अगर फ्लूइड टैंजेंशियली बाहर आना है तो इस एंगल कितना होगा? थीटा, करेक्ट? सो दिस इज थीटा। अब मान लो कि जब फ्लूइड और कोन का इंटरेक्शन हो रहा है उस टाइम पे कुछ फ्रिक्शन नहीं है, ओके? सो तब क्या होता है? जिस वेलोसिटी से फ्लूइड अंदर जा सकते हैं उसी वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आते हैं, करेक्ट? ऐसा नो? देन इफ दिस वेलोसिटी इज वीजे, ये जो वेलोसिटी फ्लूइड का एग्जिट में होता है उस वेलोसिटी भी वीजे आता है, करेक्ट? सो इन द एक्स डायरेक्शन इसका कंपोनेंट होगा वीजे कॉस थीटा, और
ये सारे जगह पे, क्योंकि दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, सो ये सारे जगह पे जो फ्लूइड आते हैं वो सिर्फ थीटा एंगल में आते हैं, करेक्ट। सो देयरफॉर हर एक पॉइंट पे सब पॉइंट्स का वेलोसिटी वीजे कॉस थीटा होगा इन द एक्स डायरेक्शन, बट लेकिन is in the negative direction, correct? So vj cos theta इस तरफ है, लेकिन पॉजिटिव एक्सिस x एक्सिस इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये सारे जगह पे v आउट कितना होगा, v आउट होगा माइनस vj cos theta, सो m डॉट टाइम्स माइनस vj cos theta, ये आएगा, ऐसा नो यहां तो यहां माइनस होगा, या पक्का माइनस होगा, करेक्ट, बिकॉज द थीटा इज इन द upward direction and v cos theta, vj cos theta is in the right side, but x axis is towards the left, okay? So ultimately like minus sign hoga. So this is the sum of all the points which are coming out, minus sum of all the points at inlet, सीधा center से जाए, और that has also m dot, और inlet पे velocity कितना है, इस पॉइंट पे फ्लूइड का वेलोसिटी डायरेक्टली इसी डायरेक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन में vj है, सो डायरेक्टली इसका वैल्यू होगा vj actually here, correct? So ये होगा vj, fine. Now let's see, f is equal to minus total minus sign m dot vj, if you take m dot vj common आपके पास होगा 1 plus cos theta actually here, okay? लेकिन यहां एक चीज आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, यहां जो वैल्यू दिया था वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ऐसा नो, करेक्ट? यहां जो वैल्यू दिया था वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है एक्चुअली, क्यों? हम सबको पता है कि इफ एक्स इज इन दिस डायरेक्शन और ये फोर्स इस तरफ से लगाया तो पक्का इस फोर्स नेगेटिव होगा, क्लियर? सो द एक्चुअल फोर्स इन दिस केस इज -3/2 v 3/2, ये क्या है, -3/2 रो ये जे vj स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m डॉट कितना होगा, सो इस फ्लूइड का वेलोसिटी मतलब डेंसिटी रो, डायमीटर ऑफ द जेट इज dj, सो दिस इज vj, सो ये होगा कि माइनस रो aj vj इज द मास फ्लो रेट इनटू, और एक vj है, सो स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस cos थीटा होगा। एक्चुअली सबको पता चला कि क्यों, वाई आई एम पुटिंग अ माइनस साइन, क्योंकि यहां जो फोर्स एनालिसिस हम कर सकते हैं वो x and y axis की कोऑर्डिनेट सिस्टम की वजह से करते हैं, ओके? बट व्हेन दिस फोर्स f is given, this is just magnitude, क्योंकि this f is towards left, so when positive x axis is towards right, ये f नेगेटिव होगा पक्का, okay? So that's the equation, clear? Did you all understand this or not? Please type it in the chat box. Did you all understand why did I put a minus sign here? Because this f is acting in the negative x direction, इसलिए मैंने एक माइनस लगा, ठीक है? यस, सो अब कैंसिल करेंगे चीजों को, माइनस माइनस रो ये विजय स्क्वायर, रो ये विजय स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2, सो थीटा कितना होगा 60 डिग्री। बस इतना ही क्वेश्चन है। मान लो कि अगर आपको इस कॉन्सेप्ट पता है, इस लाइन लिखने में, ये दोनों लाइन लिखने में 1 मिनट हो जाएगा, और when you substitute and simplify it takes 1 more minute, so hardly 2 minutes में इस क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, okay? Last step not clear, one step, look here, the reason why this f is negative is because this f is actually acting in the negative x direction, okay? अरे एक चीज बताइए आप लोग, अगर मान लो कि fluid is getting interacted with cone in this direction, the force on the cone will be right side or left side? The force acting on the cone will be a right side or left side? The force acting on the cone will be towards right side, correct? Now अगर कोन के ऊपर फोर्स राइट साइड है तो फ्लूइड के ऊपर रिएक्शन फोर्स किस साइड पे होता है, कौन सा साइड पे होता है? मान लो कि अगर if the fluid force on the cone is towards right, then the reaction force on the fluid will be towards left or right? It should be towards left or right? It should be left, है ना? Opposite side पे होता है normally, so left side होना चाहिए। So अगर force acting on the fluid left side होना है तो, so this is force acting on the fluid, then on fluid of course, so इसका value negative आएगा पक्का, so इसलिए मैंने एक माइनस साइन रहा,
ठीक है। सो यहां जो वैल्यू दिया था वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है। सो लेकिन इसके ऊपर एक माइनस साइन डालना पड़ेगा क्योंकि फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट इन द रिएक्शन फोर्स। ओके, इसके वजह से मैंने एक माइनस साइन लिया था, यहां एक माइनस साइन लिया था। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो थीटा आएगा 60 डिग्रीज बस। सो द सेमीकोन एंगल इज 60 डिग्रीज। सबको समझ में आया या नहीं? बताओ जल्दी। Come on, type it in the chat box. Yeah, clear? So that's why the angle theta is 60 degrees. So theta is 60. So देखेंगे कि कितने लोग पोल पे 60 एंटर किया था। 29.41%। बढ़िया। So 5 लोग। This is top 5 I think, but लेकिन वंश, पुष्पक, नीतीश, स्वाति, आलोक, नाइस। ओके, वंश ने 24 सेकंड्स पे लिखा, बढ़िया। तो लेट्स सी 60 डिग्रीज इज द एक्चुअल आंसर। चलो दूसरा क्वेश्चन कहेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ए टैंक ऑफ वाटर सिट्स ऑन ए कार्ट। ओके, सो ए टैंक ऑफ वाटर, ये है टैंक ऑफ वाटर, एक कार्ट पे बैठा था। व्हील्स एज शोन इन द फिगर। द कार्ट इज अटैच्ड यूजिंग ए केबल, ओके, टू ए मास m which is equal to 10 kgs. The coefficient of static friction between the mass to the ground is mu is 0.05. यहाँ फ्लोर और बॉक्स के बीच में static friction होगा पक्का। So 0.05 is the case. If the gate blocking the tank exit is removed, मान लो कि यहाँ एक गेट है, so इस गेट हमने निकाल दिया। So then the value of mass m that is just sufficient to hold the tank in place is dash kgs. पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखिए, जब आप इस गेट यहां से निकलते हैं, सो इस डायमीटर से फ्लूइड बाहर, इस एग्जिट से फ्लूइड बाहर जाते हैं, करेक्ट? यस और नो? व्हेन यू टेक ऑफ दिस गेट, फ्लूइड विल गो आउट लाइक दिस। जब फ्लूइड इस डायरेक्शन से बाहर जाए, रिएक्शन फोर्स की वजह से कार्ट लेफ्ट साइड आने के लिए कोशिश करते हैं, यस और नो? When this gate is taken off, because of the fluid movement, this cart, because of the reaction, मान लो कि आपके पास एक रॉकेट है, ओके, सो रॉकेट का एग्जॉस्ट गैसेस पीछे आए तो रॉकेट आगे चलेगा ना, सो ऐसे, सो जब फ्लूइड ऐसे जाते हैं, इस कार्ट लेफ्ट साइड आने की कोशिश करते हैं, यस और नो? सो अब कार्ट लेफ्ट साइड आने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इसको अटैच करने के लिए, मतलब इसको वहां रहने के लिए हमने एक मास से टाई किया था। देयर इज अ केबल इन बिटवीन, ओके, सो देयर इज अ केबल एंड उस केबल से हमने इस टैंक को we tied to this mass, and this mass and flow has friction obviously, okay, so इसकी वजह से because of this, when this tank tries to move in this direction, जब टैंक ऐसे जाने के लिए कोशिश करते हैं, इस ब्लॉक को भी ऐसे लेने के लिए कोशिश करते हैं, करेक्ट? सो बिकॉज ऑफ दिस, when this tank moves, this block also tries to move, लेकिन जो ब्लॉक और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन होते हैं वो इस सारे सेटअप को होल्ड कर सकते हैं, करेक्ट? सो दिस इज द फिजिक्स ऑब्वियसली। डू यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाई टैंक विल मूव इफ आई टेक दिस गेट? Because of the thrust force from this jet, correct? Yes or no? Type in the chat box. सबको समझ में आया या नहीं? मान लो कि अगर मैंने इस गेट निकल दिया यहां से, सो तब डेफिनेटली वाटर चलेगा ऐसे, सो बिकॉज ऑफ द रिएक्शन फोर्स टैंक आगे जा सकते हैं, यस और नो? यस। और इस टैंक को वहां रहने के लिए हमने एक ब्लॉक से बांध किया, ओके, देन देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लो व्हिच विल नॉट अलाउ द ब्लॉक टू मूव। इफ ब्लॉक इज नॉट मूविंग, टैंक आल्सो वोंट मूव। नाउ अब क्वेश्चन में ये पूछना है कि वैल्यू ऑफ मास m दैट इज जस्ट सफिशिएंट टू होल्ड द टैंक, ओके, मान लो कि मैंने एक 100 kg डाल के यहां लगा दिया, ओके, देन आफ्टर दैट अल्टीमेटली टैंक कैन नॉट मूव, ओके, बट देयर इज सर्टेन लिमिटिंग केस, आई मीन एग्जैक्टली द मैचिंग केस वेयर एग्जैक्टली द मास इज जस्ट सफिशिएंट move. Mass is 10 kg. Yeah, 60 degrees वैल्यू क्या देख रहा है? तो 60 डिग्री वाला mass is 10 kg, it's given, okay, to a mass m, okay, but it's not the correct answer, okay, so maybe let's do something like this. Is attached to a mass m, ठीक है, maybe they have attached to the mass 10 kg to stop this, लेकिन हम exactly जो mass चाहिए वो calculate करना पड़ेगा, ठीक है? If you don't want this, you can delete this, no issue. Just to divert, they have given maybe the coefficient of static friction is given, so calculate the mass. Outlet angle है क्या? है ना? 60 degrees. यहां 60 degrees दिया था लोग ने, 60 degrees. Okay, so the gate is inclined at 60 degrees. मतलब
जब इस गेट से मतलब इस ओपनिंग से पानी आता है, सो उस पानी 60 डिग्री एंगल से एग्जिट होता है, ठीक है। सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। इंटीजर टाइप 150 सेकेंड्स स्टार्ट। ऐसा एक क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन गेट में आया था 2-3 साल पहले। फिजिकल फील आए ना ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, एग्जैक्ट फिजिकली क्या फील होता है, मतलब क्यों ये सब चीज करना है, थोड़ा सा फील आता है, कर लो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द वीडियो इज ऑटोमेटिक एंडिंग अगेन एंड अगेन, इज इट? अच्छा, थोड़ा इश्यू चल रहा है क्या? 7.14 kgs मे बी, देखेंगे आएगा या नहीं। पोल के लिए यू कैन राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर एंड आंसर एंटर द आंसर, क्योंकि हमारे पोल पे डेसिमल सेंटर करने का मुमकिन नहीं है अभी। सो हाँ है क्या, ठीक है। सो यू कैन राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर फॉर एंटरिंग इन द पोल। मान लो कि आपका आंसर 7.14 आया सच में, सो यू कैन एंटर 7 इन द पोल। ओके, 7 डाल दिया, ठीक है। सॉल्व किया इस क्वेश्चन, लास्ट 20 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। नीतीश, वनित, ये लोग सॉल्व किया। सो लेट्स सी, ठीक है, बाकी लोग ट्राई कर लो। सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मान लो कि मैंने इस ब्लॉक लिया था, ठीक है, दिस इज मास m। तो अब हम इस मास को फ्री बॉडी डायग्राम लिखेंगे। सो दिस इज mg, सो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। स्टिंग से टेंशन आते हैं क्योंकि स्टिंग इस मास को पुल करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन यहां फ्रिक्शन भी है, सो विच इज म्यू n। सो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ब्लॉक स्टेशनरी होगा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। सो इफ यू टेक दिस एज द x डायरेक्शन एंड दिस एज द y डायरेक्शन, देन सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। इससे हमको पता चलेगा कि n इज इक्वल टू mg, ये सब हाई स्कूल स्टफ है, आप लोग ने किया था। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये देता है कि t इज इक्वल टू म्यू n, विच इंप्लाइज t इज इक्वल टू म्यू mg एक्चुअली हियर, करेक्ट। सो t इज इक्वल टू म्यू mg ऑफ कोर्स। सो जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम में होता है, सो उस टाइम पे स्टिंग में जो टेंशन होता है, सो उस टेंशन का वैल्यू म्यू mg होगा, पक्का, करेक्ट। पोल हैज एंडेड, ऑलवेज शोइंग पोल हैज एंडेड। अच्छा ठीक है, पोल काम नहीं कर रहे, फाइन, विल सी। ओके, सो t इक्वल टू म्यू mg। अब इस कंट्रोल वॉल्यूम के बारे में आइए। नाउ लेट अस टेक द कंट्रोल वॉल्यूम। इस पूरा कार्ड को हम कंट्रोल वॉल्यूम ले सकते हैं, थोड़ा आसान होगा एनालिसिस। यू कैन चूज कंट्रोल वॉल्यूम एट डिफरेंट प्लेसेस, नो इश्यूज। ओके, because this is the region in which fluid is getting impacted, so this is the control volume actually here. Okay, so now let's see, if that's the control volume, sigma fx on cut by fluid should be, so मान लो कि this is the tension T of the cable. Okay, it's that string is tight of course, so उस टाइम पे this is the tension T in the string. So कार्ट वहां रहने के लिए
जो इस टी का वैल्यू होता है उसी वैल्यू इस फोर्स भी होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ऑपोजिट साइंस में होते हैं, करेक्ट? ऐसा हो इन द एक्स डायरेक्शन ऑब्वियसली सिग्मा एफ एक्स ऑन कार्ट बाय द फ्लूइड इज सेम एज माइनस टी, क्योंकि टी राइट हैंड साइड होगा और फोर्स ऑन द कार्ट force on the cart will be towards left and tension will be pulling right, so both these things should be mathematically, I mean magnitude point of view, they should be equal, okay? Otherwise cart chalega wahan se. So sigma fx on cart is minus sigma fx on fluid is equal to minus t, so minus minus हम cancel करेंगे और इस t को mu mg से replace भी करेंगे, okay? So this implies sigma fx on fluid, so sigma fx on fluid कितना होगा? Sigma m dot v out in the x direction minus summation m dot v in at the inlet in the x direction is equal to tension, और tension का वैल्यू हमने इससे भी निकला, so mu m g होगा यहाँ, करेक्ट? ऐसा हो नो? फाइन, सो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। यहां तक सबको ठीक है, क्योंकि रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम की वजह से हमने सिग्मा एफएक्स ऑन फ्लूइड को इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस किया था, और फोर्स एनालिसिस ऑफ ब्लॉक की वजह से हमने टी को म्यू एमजी से रिप्लेस किया था। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस पॉइंट तक सबको क्लियर है या नहीं, बताओ जल्दी बताइए, इस पॉइंट तक सबको क्लियर है या नहीं? यस, ओके। अब वापस आ जाइए। दिस इज लाइक 2 मीटर्स हाइट, इस पॉइंट से यहां तक 2 मीटर्स हाइट, ओके। सो दिस इज 2 मीटर्स हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस, थोड़ा सा, ओके। सो दिस इज 2 मीटर्स। मान लो कि इसका वैल्यू h है, इसका वैल्यू h इज 2 मीटर्स, ठीक है। बाद में लेकिन 2 मीटर्स रिप्लेस करेंगे, लेकिन पहले h लिखेंगे, ठीक है। सो इफ दिस फ्लूइड इज कमिंग आउट एट वेलोसिटी v, ओके, सो फ्लूइड कितना वेलोसिटी से बाहर आए? v वेलोसिटी से आ रहा है, क्योंकि इस हेड की वजह से डेफिनेटली यहां जो फ्लूइड बाहर आते हैं, सो उस फ्लूइड का वेलोसिटी v होगा, v इक्वल टू √2gh। आप सबको पता है कैसे v इक्वल टू √2gh। इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बेर्नौलीज इक्वेशन लगाओ, पता चलेगा कि v इज इक्वल टू √2gh, है ना। सो सबको पता चलता है v इक्वल टू √2gh, यस और नो? एनी डाउट इन दिस? मान लो कि इस हाइट h है, सो इस एग्जिट से जो वेलोसिटी बाहर निकलता है उसका वेलोसिटी √2gh होगा, ऐसा और नो? क्लियर? क्योंकि इस दोनों पॉइंट्स पे अगर आपने बेर्नौलीज इक्वेशन लगा तो प्रेशर इज सेम इन बोथ द एंड्स, दोनों पॉइंट्स एटमॉस्फेयर के लिए ओपन है, और हियर द वेलोसिटी इज 0, क्योंकि इस सरफेस बहुत कम वेलोसिटी से आ सकते हैं। सो मान लो कि यहाँ एक स्मॉल एग्जिट है, 50 mm का एग्जिट है। सो दिस टैंक इज लार्ज टैंक, डायमीटर नहीं दिया था, सो वेरी लार्ज टैंक। सो व्हेन फ्लूइड इज कमिंग हियर, इस लेयर बहुत धीरे आते हैं, करेक्ट, एंड व्हेन इट्स कमिंग वेरी स्लो, अल्टीमेटली द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट 1 इज 0। सो अगर आपने p1 p2 कैंसिल कर दिए, v1 इक्वल टू 0 एंड देन z1 माइनस z2 इज h, सो अल्टीमेटली v इक्वल टू √2gh आते हैं, ओके। सो v out, the velocity at which fluid is coming is v, but in the x direction, so देखिए this angle is 60, so at this point if this is the velocity in the x direction it is v cos 60, v cos 60, करेक्ट, क्योंकि हमने सिर्फ x डायरेक्शन पे फोर्स बैलेंस लिखा है। सो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट्स होता है वो कंपोनेंट सिर्फ x डायरेक्शन में कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा। सो व्हेन दिस इज वेलोसिटी v, देन अल्टीमेटली इस x डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होता है वो होगा v cos 60, ओके। सो cos 60 इज 1/2, सो मैंने सीधा v/2 लिखा है, ओके, बिकॉज cos 60 इज 1/2। नाउ इस कंट्रोल वॉल्यूम में किसी जगह पे इज देयर एनी इनलेट? प्लीज टेल मी, इस कंट्रोल सरफेस में किसी जगह पे फ्लूइड इज एंटरिंग इनसाइड? इज फ्लूइड एंटरिंग इनसाइड? कम ऑन, टाइप इन द चैट बॉक्स क्विकली। नो इनलेट, करेक्ट। सो इस कंट्रोल वॉल्यूम पे किसी जगह पे इनलेट नहीं है। सो इफ देयर इज नो इनलेट, 0, ओके। अब m डॉट कितना होगा? एक ही एग्जिट है, सो m डॉट, सो रो एरिया ऑफ द जेट into velocity vj से आ रहे, so this is the mass flow rate ultimately, and ये होगा v/2 x component of velocity, correct? because मान लो कि इस सेक्शन से, so इस सेक्शन में कितना मास क्रॉस कर रहे हैं exactly, so this is o a v, it's almost like horizontal because whatever the mass that exactly enters here, same mass will leave here, of course, okay, so that's why rho a vj into v/2, this is 0, ये होगा mu m g, of course, okay। so इससे हम लिखेंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एरिया ऑफ द जेट कितना होगा? π/4
डायमीटर ऑफ द जेट स्क्वायर इंटू वीजे स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब m का एक्सप्रेशन क्या होगा इससे, m इज इक्वल टू पाई रो डब्ल्यू डी जे स्क्वायर, इस वीजे स्क्वायर की जगह पे हमने 2gh लिखेंगे, ठीक है। सो 2gh क्योंकि vj द वेलोसिटी एट विच दिस जेट कम्स आउट इज √2gh, सो अल्टीमेटली vj स्क्वायर होगा कि 2gh। सो 2gh हम रिप्लेस करेंगे इस v स्क्वायर की जगह पे, और 4 इंटू 2 एक 8 भी है हमारे पास, और म्यू g भी है एक्चुअली, ओके। सो वी कैन कैंसिल दिस एक्सप्रेशन, g कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा 8 टाइम्स, सॉरी हाँ 2, इसको 2 कहां से आया, 2gh ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, हाँ एक 2 कैंसिल होगा, 4 म्यू। सो m इज इक्वल टू पाई टाइम्स रो डब्ल्यू डी जे स्क्वायर h बाई म्यू, 4 टाइम्स म्यू, इतना आएगा, ओके। सो दिस इज द मिनिमम मास एट विच दिस कार्ट विल स्टे स्टेशनरी, बस इतना है, ओके। सो यहां तक फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसके बाद सिर्फ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन 2-3 स्टेप्स करना पड़ेगा। सो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट्स सी। m इज इक्वल टू पाई इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होगा, नॉर्मली 1000, लेकिन देखेंगे कि अगर किसी दूसरा वैल्यू दिया था नहीं, सो 1000 10 क्यूब डी जे स्क्वायर। सो डायमीटर ऑफ द जेट कितना होगा, इसका डायमीटर दिया, इस चैनल का डायमीटर 50 mm, सो 50 mm, सो 50 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर्स, सो ये होगा 0.05, करेक्ट, बिकॉज 5 इंटू 10 पावर माइनस 2, सो 0.05 स्क्वायर इंटू ये जो हाइट होगा ये होगा 2 मीटर्स, बिकॉज यहां दिया था फ्री सरफेस और इस एग्जिट के बीच में जो गैप है वो 2 मीटर्स है एक्चुअली। सर दिया शुड बी द डायमीटर ऑफ एग्जिट पाइप ना, dia should be, yes of course it is the exit of the diameter pipe only because this is a uniform cross section pipe ना, ये पाइप जो है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का पाइप है, ठीक है, इसलिए जो डायमीटर यहां दिया था वो सेम डायमीटर यहां भी है, ठीक है, सो नो इश्यू। देन मान लो क्या और क्या चीज है, 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 0.55, सो दिस इज 0.55, सब्स्टिट्यूट कर लो, मास आएगा इन केजेस। सो चेक करेंगे कि कितना आएगा, फाइन। सो चेक करेंगे अब हम, मास इज इक्वल टू कुछ केजेस आएगा, सो कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। पाई इंटू 10 क्यूब, सो 10 क्यूब, पाई इंटू 10 क्यूब एक्चुअली, ओके, सो 3141 इंटू 0.05 स्क्वायर इंटू 0.05 स्क्वायर एक्चुअली इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.55, वही है ना स्टैटिक फ्रिक्शन, सो 7.1399, सो कितना डेसिमल्स दिया, राउंडिंग ऑफ, ओके नथिंग इज गिवन, सो राउंड टू 2 डेसिमल्स बाय डिफॉल्ट 7.14 केजेस, मतलब जो एग्जैक्ट मास होता है जो सिस्टम को वेस्ट में आते हैं, सो वो होगा 7.14 केजेस। सो फॉर सेफ्टी दे माइट हैव टाइप 10 केजेस, बट एग्जैक्टली 7.14 केजेस, 7140 ग्राम्स ऑफ मास could be sufficient to hold the cart stationary actually, okay। so ये क्वेश्चन ये है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को यूज करके आरटीटी यूज करके फोर्स ऑन द फ्लूइड भी यूज किया इस क्वेश्चन में हमने, एंड दोनों को इंटरलिंक करके मास कैलकुलेट किया बस। यस और नो, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? तो 7.14 केजेस आएगा आपको, फाइन। और ये जो चीज करने में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, इस कैलकुलेटर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एंड में मुझे ये बता सकते हो कि सितंबर में भी पीडब्ल्यू बैच लॉन्च होते हैं क्या? आई थिंक दे लॉन्च वन बैच, बट गेट 2025 के नहीं होगा, ओके। हाइड्रोस्टैटिक लॉ से भी सेम आया, पक्का आता है, किसी भी टेक्निक फॉलो कर लो सेम ही आता है ना, ऑफ कोर्स, फाइन। 2026 के लिए होता है जनरली, या 2026 के लिए बैचेस लॉन्च होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो हाँ, इस कैलकुलेटर पूरा गेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आई विल टेल यू हॉनेस्टली, इस कैलकुलेटर की वजह से मैंने 2 बार ऑल इंडिया रैंक 1 मिस किया था। मैंने बताया था ना आपको, मेरा गेट ऑल इंडिया रैंक 4 आया था एक्सी में, और 10 भी है उसके पहले। सो इस कैलकुलेटर की वजह से कभी कभी क्या होता है, यहाँ बहुत कंफर्टेबल है इस कैलकुलेटर को टाइप करने के लिए, लेकिन मैं डिस्प्ले करता हूँ क्योंकि आपको भी पता चलेगा इस कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, ठीक है, और हाउ टू गेट दैट कैलकुलेटर विच इज शोन इन योर स्क्रीन, ठीक है, मैं बताता हूँ।
गेट के लिए कैशियो अलाउड नहीं है, ये पता है सबको। मान लो कि अगर गेट एग्जाम पे जाए, सो गेट एग्जामिनर्स विल नॉट अलाउ यू टू टेक कैलकुलेटर। अंदर जो कैशियो होते हैं ना, कैशियो 991 FX, ये सब अलाउड नहीं है, पता है या। और मान लो कि अगर आपको इस कैलकुलेटर चलना नहीं आता है, सो देन डेफिनेटली इट्स ए बिग प्रॉब्लम फॉर यू। TCS कैलकुलेटर सच मान लो आ जाएगा, हाँ। अरे वो एक्सटेंशन से सब नहीं है, एक्चुअली यू कैन टाइप गेट कैलकुलेटर ऑनलाइन, सो पहला लिंक आएगा TCS आयोन का, सो साइंटिफिक कैलकुलेटर। और जब आप गेट एग्जाम लिखता है, सो गेट 2025 लेट्स से मॉक टेस्ट लिखेंगे एक दो, मॉक टेस्ट लिंक इज नॉट मेट एक्टिवेटेड, गेट 2024 वेबसाइट ओपन करेंगे हम, ठीक है। सो 2024 मैंने खुल के दिखाता हूँ आपको अभी, जैसे इस कैलकुलेटर का यूज करना है। तो मॉक टेस्ट है ना, तो मान लो कि मैंने गेट एग्जामिनेशन मैकेनिकल पे दिया है, तो मैजिक काम नहीं किया, ये बहुत स्लोली लोड हो है ना। तो ठीक है, एग्जाम का मतलब वेबसाइट का वैलिडिटी 1 ईयर खत्म हुआ था, लास्ट ईयर अगस्त में लॉन्च किया इन लोगों ने वेबसाइट, IISc ने। तो आई थिंक एनीवे बाय द टाइम इट लोड्स आई विल टेक यू टू अनदर, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू यूज दिस कैलकुलेटर, ओके। सो इस कैलकुलेटर चलना कितना लोगों को नहीं आते, प्लीज रेज योर हैंड्स, ऑनेस्टली से मी इन द चैट बॉक्स। इस कैलकुलेटर को यूज करने में कितने लोगों को दिक्कत है एक्चुअली, इस कैलकुलेटर को यूज करने में कितने लोगों का दिक्कत है? अरे इतना सारे लोगों को, अरे बाप रे, आप सब लोग गेट देना है 2025 में, सच में इस कैलकुलेटर में दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो है, ठीक है, ओके ओके फाइन, मुझे समझ गया। लुक आई विल टेल यू समथिंग, नॉर्मली आपके पास जो कैलकुलेटर होता है कैजियो, ठीक है, ऑलमोस्ट सम 40 मिनट्स, सो आई विल टीच यू सम स्टोरी फॉर 5 मिनट्स, ओके। मिस्टेक्स क्या होता है, पहले इस कैलकुलेटर को कैसे चलता है, ओके 70% आई नो, पावर में दिक्कत होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सो नॉर्मली मेन डिफरेंस बिटवीन कैशियो एंड इन दिस कैलकुलेटर, कैशियो में हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि e⁵ का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके। सो पहले हम एक्सपोनेंशियल शिफ्ट लगा के e⁵x फंक्शन क्लिक करते हैं, उसके बाद 5 क्लिक करते हैं, देन इज इक्वल टू, सो यू विल गेट e⁵ का वैल्यू। लेकिन इसमें पहले वैल्यू टाइप करना पड़ेगा, बाद में फंक्शन टाइप करना पड़ेगा। कैशियो में पहले फंक्शन टाइप करते हैं और इसके बाद जो पॉइंट का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा उस वैल्यू टाइप कर सकते हैं, ओके। लेकिन इस कैलकुलेटर में पहला वैल्यू टाइप करना है, उसके बाद फंक्शन टाइप करना है। मान लो कि मैंने e⁵ कैलकुलेट करना है, तो e⁵x क्लिक किया और 5 क्लिक किया, इज इक्वल टू क्लिक किया, आंसर 5 आया था, बट हम सबको पता है कि e⁵ का वैल्यू 5 नहीं है, ओके। सो ऐसे करना है 5 एंड उसके बाद e⁵x क्लिक करना, सो पावर ऑफ e⁵ 148.413, ओके, दिस इज द वे टू पावर। ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है। और there is one thing very important, ln और log, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चलना है। ln होता है कि नेचुरल लॉगरिथम, log टू द बेस e, ओके, बट LOG होता है कि टू द बेस 10 एक्चुअली, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ln होता है कि नेचुरल लॉगरिथम e, मान लो कि मैंने e क्लिक किया था और ln क्लिक किया उसके बाद, क्योंकि मैंने बताया था ना फर्स्ट वैल्यू एंड देन फंक्शन, सो ln e इज 1, सबको पता है कि log e टू द बेस e 1 आएगा। मान लो कि मैंने 10 क्लिक किया और ln क्लिक किया, आंसर 1 नहीं आया, क्योंकि ln नेचुरल लॉगरिथम है, लेकिन इफ आई क्लिक द सेम 10 एंड इफ आई क्लिक log तब 1 आएगा, ओके। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चलना है, नहीं तो दिक्कत होगा यहाँ भी। दूसरा चीज ये है कि π/6 sin π/6 का वैल्यू कितना है, sin 30, sin π/6 का वैल्यू कितना है नॉर्मली, sin π/6, sin 30 का वैल्यू कितना है? अरे इतना बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोग sin 30 का वैल्यू बताने में, बता दो ना जल्दी। sin 30 होगा, ओ माय गॉड, हाफ होगा ना 0.5। सो चेक करेंगे एक बार आते या नहीं, ओके। सो देखिए पाई मैंने क्लिक किया बाई 6 इज इक्वल टू, सो π/6 का वैल्यू ये होगा। सो साइन बटन क्लिक कर रहा हूं मैं, देखिए साइन क्लिक किया, सो साइन π/6 0.5 आना है, लेकिन यहां आया 0.009, ओके। सो बहुत सारे लोगों को ये मिस्टेक नहीं पता चलता है, सो डेफिनेटली दे मेक मिस्टेक्स, स्पेशली इन जब मैथ्स में न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व कर सकते हैं उस टाइम पे, बहुत सारा कैलकुलस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उस टाइम पे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब लास्ट कैलकुलेशन का स्टेप होता है, सो उस टाइम पे लोग गलती करते हैं, ओके। सो देखिए डायरेक्टली π/6 एंड देन अगर आपने साइन क्लिक किया तो 0.009 आएगा, विच इज रॉन्ग ऑफ कोर्स, ओके। इसमें एक चीज करना पड़ेगा, व्हेन, या ऑफ कोर्स करेक्ट।
सो व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग साइन पाई बाय 6 रेडियन में है, ओके लेकिन अगर यहाँ इस रेडियन बटन को देखा तो ये डिग्री में है, ओके सो साइन पाई बाय 6 कैलकुलेट करने से पहले इस बटन को हम इस ब्लू डॉट से रेडियन पर शिफ्ट करना पड़ेगा, ओके देन वॉट एवर द एंगल यू एंटर इट टेक्स इन रेडियंस। अब पाई बाय 6 कैलकुलेट किया तो पाई बाय 6 एंड अब इफ यू क्लिक साइन देन क्लिकिंग साइन इट गिव्स यू 0.5 क्योंकि पाई बाय 6 रेडियन में है। इस बटन शिफ्ट करना मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को नहीं पता है एंड जब कैलकुलेशन करते हैं एग्जाम में लास्ट में गलत आंसर लिखते हैं लोग, ओके सो प्लीज बी केयरफुल। ठीक है, मैंने गेट 8 बार क्वालिफाई हुआ था, ऑल माई 8 अटेम्प्ट्स आई क्वालिफाइड विद बेस्ट रैंक ऑफ 4, लेकिन आज तक भी मुझे इस कैलकुलेटर यूज करने में थोड़ा सा मिस्टेक्स होता है, इसके वजह से ऑल इंडिया रैंक 1 मिस होता है हर बार, ओके आई एम टेलिंग यू एक थिंग ऑनेस्टली, यहाँ स्क्रीन थोड़ा लंबा है सो इट्स अ बिग स्क्रीन, सो अल्टीमेटली व्हाट इज मॉड इन दिस अल्टीमेट वैल्यू, ओके एमएस होता है कि सेव्ड वैल्यू। मान लो कि मैंने कुछ वैल्यू टाइप किया 12.365, ओके देन क्लिकिंग ऑन एमएस, मैंने एमएस पे सी आई विल टेल यू वन थिंग, व्हेन यू क्लिक 12.365 यहां देखिए कुछ नहीं है, बट लेकिन जब मैं एमएस पे क्लिक करता हूं इमीडिएटली एक यम आता है, इसका मतलब यह है कि कैलकुलेटर की मेमोरी पे एक वैल्यू स्टोर हुआ, ओके एंड सो कैंसिल, फिर वो यम नहीं चला, मीन्स कैलकुलेटर हैज स्टिल सम वैल्यू इन द मेमोरी। सो अगर वो वैल्यू पता चलना है तो एम आर मेमोरी रिकलेक्ट, सो एम आर क्लिक कर लो 12.365 आते हैं। सो कभी कभी क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल मेथड्स में नहीं तो हमारे हीट ट्रांसफर में क्वेश्चंस ऐसे आता है कि मेनी टाइम्स इट हैपेंस वी कीप रिपीटिंग द सेम वैल्यू। मान लो कि मैंने सी का वैल्यू कैलकुलेट किया था, ओके हीट ट्रांसफर आई डोंट नो कितने लोगों ने किया था, बट मान लो कि मैंने हीट कैपेसिटी रेशियो सी मिन बाई सी मैक्स इसका वैल्यू कैलकुलेट किया। अब मान लो कि मैंने इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करवाई, ओके सो 1 माइनस ई पावर माइनस एन टी यू 1 माइनस सी बाई 1 माइनस सी इंटू ई पावर माइनस एन टी यू टाइम्स ऑफ 1 माइनस सी, ऐसे एक एक्सप्रेशन है। मान लो कि व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन विल डू लेटर, इट्स बेसिकली द इफेक्टिवनेस ऑफ ए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, बट मान लो कि ऐसे एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, देन तब इस सी को हमने 3 जगह पर यूज करते हैं, करेक्ट 1 2 एंड 3, सो we can actually recollect this value c every time by storing this value। तो ऐसे थोड़ा सा छोटा मोटा इंपॉर्टेंट चीज है, सो जो आपको पता चला तो आपका कैलकुलेशंस आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं आप लोगों को, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये वाला। सो दिस इज ए होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, मैं इसके आंसर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाता हूं, होमवर्क, तो सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। C का वैल्यू लेस देन 1 आता है ना, इट कैन बी 1 ड्यूरिंग फेज चेंज, ओके सो विल सी व्हाट इज दैट। If both the fluid have same heat capacities it is 1, if one fluid has if there is phase change and all then C can go to 0, all these things can happen, okay so no issue in all these cases, we'll see what happens maybe in heat transfer class संदीप सर पढ़ाते हैं आपको। So if you have this homework then please solve this question, okay so इस क्वेश्चन में ये है कि I will just explain the question, इसके बाद हम प्लेट को भगाएंगे, ठीक है। So a tank shown in the figure has 2 nozzle exits at different depths as shown in the figure। So इस डेप्थ पे एक एग्जिट है जिसका डायमीटर d1 और इस डेप्थ पे दूसरा एग्जिट ये है कि डायमीटर d2 एक्चुअली, ओके so this is d2। If the net horizontal force acting on the tank is 0, मतलब टैंक वहां है, net force acting on the tank in the horizontal direction is 0, then the ratio of d1 by d2 is square root of k, the value of k is dash, okay मतलब मान लो कि इस एग्जिट नहीं है, ओके सो इस एग्जिट नहीं है और कुछ फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, मान लो कि फ्लूइड इस डायरेक्शन से इस एग्जिट से बाहर आए, देन डेफिनेटली टैंक राइट साइड जाने के लिए कोशिश करते हैं, करेक्ट टैंक विल मूव राइट, बट लेट्स से इफ यू डोंट हैव दिस एग्जिट इट इज क्लोज्ड बट दिस एग्जिट इज देयर, तब टैंक लेफ्ट आने के लिए कोशिश करते हैं, ओके सो देन वी कैन अंडरस्टैंड समथिंग, when there are 2 exits there is some combination where the tank remains stationary and if tank is stationary ultimately net force acting on the tank is stationary, okay so इसका होगा d2, so ultimately this d1 by d2 का रेशियो निकालना पड़ेगा, okay so this is k equal to 2, पता नहीं मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं पता है लेकिन कैलकुलेट कर लो, okay fine h and 2h are the values, okay so इस क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए। So before going to angular momentum हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जिसमें हम प्लेट को मूव करेंगे। So let's see, this is a plate at an angle theta of course, okay so this is x direction and this is y direction, ठीक है, and
दिस ए प्लेट, प्लेट सब पोल एंड कर दो। अच्छा पोल ऑन है क्या, तो वैल्यू कितना आया 7 ना, 7.14, ठीक है। सो 7 एंटर किया तो 50% लोगों ने करेक्ट किया था। सो दिस आर द टॉप 10, नाइस। 81 सेकेंड्स, 75 सेकेंड्स, बढ़िया, गुड। सो लेट्स सी, यहां फ्लूइड है एक्चुअली, ओके। सो दिस इज फ्लूइड। नाउ लेट्स सी, प्लेट फिक्स्ड नहीं है, सो प्लेट, मान लो कि इस प्लेट u वेलोसिटी से इस तरफ जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, दिस प्लेट इज मूविंग एट वेलोसिटी u, ऑफ कोर्स। तो प्लेट u वेलोसिटी से जाए और d1 by d2 इज इक्वल टू 2, पता नहीं, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे तब आंसर पता चलेगा, ओके। तो लेट्स सी, व्हेन दिस इज u एंड मान लो कि इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। सो अब हम एक कंट्रोल वॉल्यूम बनेंगे एज यूजुअल। सो कंट्रोल वॉल्यूम कैसे बनेंगे, ऐसे, ओके। सो जहां फ्लूइड ऐसे जाते हैं अंदर और यहां से बाहर आते हैं, करेक्ट। अब एक चीज ध्यान से बताइए, मान लो कि इस प्लेट u वेलोसिटी से इस तरफ जाए, देन सिंस कंट्रोल वॉल्यूम इज अटैच्ड टू द प्लेट, कंट्रोल वॉल्यूम भी इस x डायरेक्शन में u वेलोसिटी से जाते हैं, करेक्ट। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंटरिंग दिस, कटिंग दिस कंट्रोल सरफेस, जो रिलेटिव वेलोसिटी से फ्लूइड इस कंट्रोल सरफेस को कट कर रहा है, सो इस वेलोसिटी कितना होगा? कम ऑन, टाइप इट इन द चैट बॉक्स। जो वेलोसिटी से फ्लूइड कंट्रोल सरफेस को कट कर रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा? v minus u, correct? So this is v minus u actually here. So v minus u होगा, क्यों? Because the relative velocity at which fluid enters the control volume is v. क्योंकि फ्लूइड का वेलोसिटी v है, जब फ्लूइड v वेलोसिटी से इस कंट्रोल वॉल्यूम पे एंटर होने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे इस कंट्रोल वॉल्यूम u वेलोसिटी से आगे चलते हैं, करेक्ट। So the relative velocity at which fluid enters the control volume is v minus u, of course. Okay. So अब मान लो कि fluid v minus u velocity से control surface में enter होए, when there is no friction drop, this is also v minus u, of course. Correct. So this is v minus u. So since this is v minus u, there is no friction along the blade. So ultimately this comes out at v minus u, of course. ठीक है. So अब हम solve करेंगे. If you do force acting on the plate, force acting on the plate, और ये प्लेट क्यों भाग गए? क्योंकि इस जेट इस प्लेट से इंपैक्ट कर रहे, ओके। सो इसके वजह से प्लेट अंदर मतलब आगे जाए। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट इन एक्स डायरेक्शन, लेट्स से फोर्स बैलेंस एक्स डायरेक्शन में करेंगे। इन एक्स डायरेक्शन, sigma fx on plate by fluid is equal to minus sigma fx on fluid by plate, on fluid by plate, करेक्ट। सो ये होता है कि मान लो कि इसको मैं fx से डिनोट कर रहा हूं, sigma fx is equal to minus, so minus of sigma fx on plate is nothing but ये देता है कि finally sigma m dot v, inlet or outlet, minus of out minus in, so this is in the x direction, minus summation m dot v in the outlet in the x direction, correct? So this is on plate, of course, okay. This is not because of the momentum change directly, this is because of all this loop, ठीक है। so अब आएंगे, हमारे पास 3 पॉइंट्स है जहां फ्लूइड कंट्रोल सरफेस को कट कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड ऑल्सो थर्ड पॉइंट, ठीक है। नाउ लेट्स सी सिग्मा एफएक्स ऑन प्लेट, ये कितना आएगा? सिग्मा एफएक्स ऑन प्लेट इज इक्वल टू सिग्मा एम डॉट वी इन एक्स। सो कितना इनलेट्स है हमारे पास? सिर्फ एक ही इनलेट है, ओके। और इसमें जो मास जा रहे हैं, सो मास एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम एक्चुअली,
ओके, सो मास एंटरिंग द कंट्रोल वॉल्यूम एट दिस पॉइंट, जो मास एंटर होता है वो होगा m.1 होगा रो ए v माइनस u. क्यों v माइनस u? बिकॉज whatever the total mass here, that is, let's say at this section mass OAV है. okay, so this complete OAV will not enter this control volume, है ना? क्यों? because when this complete mass is trying to enter the control volume is moving, so ultimately rho ये v minus u आएगा, because mass flow rate is always rho times v r dot n cap. मान लो कि रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम ने मैंने जब लिखा था डबल इंटीग्रल कंट्रोल सरफेस rho टाइम्स v r डॉट n cap dA, ये लिखा था मैंने. इसका मतलब ये है कि जो मास फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए बीटा, ओके, सो जब मास फ्लो रेट कैलकुलेट करने के लिए कोशिश करते हैं उस टाइम पे जो वेलोसिटी होता है ना वो रिलेटिव वेलोसिटी होते हैं हमेशा. इस चीज को याद रख लो, ठीक है. सो ये वेलोसिटी L2 होगा. सो जब कटिंग की टाइम पे जो मास एंटर हो सकते हैं वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी के बेसिस पे. सो रो ये एरिया ऑफ द जेट इनटू v माइनस u. सो ये होगा, सिर्फ एक ही इनलेट है हमारे पास, m.1 इंटू इस पॉइंट पे पूरा फ्लूइड ऐसे एंटर हो, सो v माइनस u ऑफ कोर्स. ओके, सो दिस इज v माइनस u माइनस अब m डॉट v आउट इन द x डायरेक्शन. सो वी हैव टू इनलेट्स, m.2 ऑफ कोर्स इंटू v आउटलेट इन द x डायरेक्शन. सो मान लो कि ये एंगल थीटा है, तो मान लो कि इस एंगल थीटा है. अगर इस एंगल थीटा है तो देन इन द x डायरेक्शन इफ दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ये होगा v माइनस यू कॉस थीटा, करेक्ट. सो ये होगा v माइनस यू कॉस थीटा. और यहां भी इफ दिस एंगल इज थीटा, इन दोनों के बीच में ये होगा कि माइनस v माइनस यू कॉस थीटा, पक्का, करेक्ट. सो माइनस ऑफ v माइनस यू कॉस थीटा. सो लेट्स सी m.u टाइम्स ऑफ इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है x डायरेक्शन पे वो होगा v माइनस यू कॉस थीटा माइनस और प्लस m.3 इंटू v आउट एट द थर्ड पॉइंट, ये होगा माइनस ऑफ v माइनस यू कॉस थीटा एक्चुअली हियर, करेक्ट. यस और नो? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. यस और नो? एवरीवन चैट बॉक्स पे टाइप कीजिए. Is this clear to all of you or not? Please type in the chat box. Yeah? Is this clear to all of you? Yes. So opposite है तो नेगेटिव ना आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने यहां माइनस साइन डाल दिया ना. m2 एंड m3 सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है. okay, m2 and m3 सेम नहीं है. so look, yeah, I'll repeat once again. देखिए, when you write sigma fx on plate is sigma m dot v times in x minus sigma m dot v out x actually here, then m dot 1 v minus u minus, so because at inlet, so inlet में कितने पॉइंट्स में इनलेट है? सिर्फ एक ही पॉइंट में इनलेट है. ओके, और इस पॉइंट में जो फ्लूइड कंट्रोल सरफेस को कट कर रहे उसका वेलोसिटी कितना है? रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस यू. सो इस जगह पे हमने v माइनस यू डाला था. और समेशन आउटलेट्स, दो आउटलेट्स है, आउटलेट 2 एंड ऑल्सो आउटलेट 3. सो m.2 v2 आउट, लेकिन एट सेकेंड पॉइंट द वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन इज v माइनस यू कॉस थीटा, ये पॉजिटिव है. सो m.u टाइम्स v माइनस यू कॉस थीटा प्लस m.3 इंटू इस जगह पे जब फ्लूइड ऐसे आए, सो इसका नेगेटिव कंपोनेंट वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन इज इन द नेगेटिव x डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव x उस तरफ है लेकिन इस वेलोसिटी बेसिकली इस तरफ है. सो माइनस ऑफ v माइनस यू कॉस थीटा. सो इसलिए माइनस ऑफ v माइनस यू कॉस थीटा लिखा मैंने, ठीक है. यस और नो? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. इज दिस क्लियर? सबको समझ में आया या नहीं? बताओ जल्दी. ओके, फाइन. सो अब हम एक काम करेंगे. अल्टीमेटली हमको पता है कि m.1 सिंस मास फ्लो रेट मास कंजर्वेशन होता है, सो m.1 इज इक्वल टू m.2 प्लस m.3, है ना? सबको पता है कि ये आएगा m.2 इंटू m.2 प्लस m.3 एक्चुअली हियर. सो अब हम कैलकुलेट किया तो ये आएगा सिग्मा एफएक्स ऑन प्लेट. सिग्मा एफएक्स ऑन
प्लेट एक्चुअली. ओके, सो ये आएगा कितना, इसको हम m डॉट 2 प्लस m डॉट 3 करेंगे. सो m डॉट 2 इंटू वी माइनस यू माइनस m डॉट 2 इंटू वी माइनस यू कॉस थीटा. सो अगर आपने m डॉट 2 v माइनस यू कॉमन लिया तो आपके पास होगा 1 माइनस कॉस थीटा. यस, क्योंकि इस पहला टर्म से, मतलब मान लो कि मैंने यहां इस m डॉट 1 की जगह पे m डॉट 2 प्लस m डॉट 3 लिखा मैंने. ओके, तब इस फर्स्ट टर्म और इस थर्ड टर्म से हमने अगर m डॉट 2 इंटू वी माइनस यू कॉमन लिया तो हमको 1 माइनस कॉस थीटा आएगा. करेक्ट. देन प्लस m डॉट 3 एंड हियर आल्सो m डॉट 3 इफ यू टेक कॉमन, माइनस ऑफ माइनस प्लस आते हैं. सो प्लस m डॉट 3 v माइनस यू टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, ये आएगा. करेक्ट. ऐसा नो, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. करेक्ट. सो कल की क्लास में हमने एक एनालिसिस किया था. m डॉट 2 ये कितना होगा, विच इज ऑफ कोर्स इफ यू राइट इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज रो q2, m डॉट 2 इज इक्वल टू रो q2, ये आएगा रो q बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. करेक्ट. और q डॉट 3 या आई मीन m डॉट 3 विच इज रो q3, ये आएगा रो q बाई 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा. कल की क्लास में हमने किया था इस एनालिसिस. ऐसा नो. सो व्हेन फ्लूइड इज एंटरिंग सम इंक्लाइंड प्लेट देन अल्टीमेटली द जेट स्प्लिट्स अप इन दिस पर्टिकुलर रेशियो. लास्ट क्लास में हमने किया था इस चीजों को. करेक्ट. सर अगर प्लेट मूव करेंगे तो इनलेट एंड आउटलेट सब जगह v माइनस यू होगा. बहनों से फिर अलग आएगा? नो, सेम आएगा. ठीक है. सो वी हैव डन दिस इन द लास्ट क्लास. ऐसा नो, याद है सबको या नहीं? सबको याद है ना ये एक्सप्रेशन? m डॉट 2 इज इक्वल टू o टाइम्स q बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और m डॉट 3 इज इक्वल टू o इंटू q बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. लास्ट क्लास में हमने निकला था. बिकॉज फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट tangentially is 0 because fluid just enters and slides smoothly, there is no friction. okay, so उस टाइम पे सिग्मा fx ऑन प्लेट ये आएगा m डॉट 2. सो m डॉट 2 की जगह पे वो सब्स्टिट्यूट करेंगे रो q बाई 2 टाइम्स v माइनस यू इंटू रो क्यू बाई 2 इंटू v माइनस 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस m डॉट 3 की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर लो रो q बाई 2 इंटू v माइनस यू इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक्चुअली. ओके, सो ये दोनों टर्म्स आएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, सो बिकॉज मान लो कि अगर m3 की जगह पे आपने इस एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर तो रो q बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा गिव्स यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. यहां भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा. लेकिन अब ये दोनों टर्म्स सेम है. ठीक है. सो सिग्मा fx ऑन प्लेट ये कितना आएगा? ये दोनों टर्म सेम ही है ना. सो रो q बाई 2 इंटू v माइनस यू इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर theta, or you can also write this as sin square theta, no issue. Sin square theta, 1 minus cos square theta is same as sin square theta. Okay, you are asking for force calculation. Why did you substitute? I could not understand the various cases you are taking for force cancellation. See, I did not cancel any force. सारा forces यही है. ठीक है. I have just substituted the velocities accordingly. बस इतना किया मैंने. Fine. अगर आपको डाउट आना है तो इस जगह पे आना है. ओके, इफ दिस डाउट इज क्लियर देन दिस इज जस्ट सिंपल मैथ्स दैट आई एम डूइंग, मैथ्स सब्स्टिट्यूशंस. इज दिस स्टेप क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सजदल हक, so please type in the chat box. इस स्टेप क्लियर है या नहीं सबको? अगर डाउट आना है तो इसी चीज पे आना है. ओके, क्योंकि why we are substituting this. So when you get this then ultimately it's very simple, just it's a bit of maths. दोनों सेम टर्म है. सो हाँ, of course. Fine. Okay, now it's fine. It's just a bit of maths ना, nothing big. ये दोनों जगह पे ये दोनों एक्सप्रेशंस लगा के सॉल्व करना पड़ेगा बस. ओके, नाउ सिग्मा fx ऑन प्लेट इज इक्वल टू, so rho q is nothing but the total mass which is coming. correct. so rho q क्या होगा? ये पूरा मास कितना आ रहा है अंदर, ये कितना है? रो ये v माइनस यू. सो रो 2 नहीं होगा ना, सो यहाँ 2 नहीं होगा. करेक्ट, बिकॉज दोनों टर्म सेम है. सो बाई 2 2 टाइम्स ऑफ दिस
हाँ, फाइनल एक्सप्रेशन में बाई टू नहीं आएगा क्योंकि ये बाई टू एंड बाई टू, सो टोटल 1/2 प्लस 1/2 1 होते हैं, करेक्ट. m.1 repeats cos this m.1 whatever you are taking is equal to mass flow rate leaving to section 2 plus mass flow rate leaving to section 3. so m.1 को हम m.2 plus m.3 लिखते हैं बस. मास कंजर्वेशन ना ऑब्वियसली, क्योंकि इस कंट्रोल वॉल्यूम पे मास इट कैनॉट स्टे इनसाइड. ओके, दैट्स द रीजन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes or no? Please type in the chat box. Now, so let's see. So यहाँ 2 नहीं आएगा पक्का. So this can be written as Q can be written as rho A into V minus U into V minus U. So you have V minus U whole square sin square theta. ये होगा force acting on the plate in the x direction. अगर आपके पास आगे पेंसिल किसी भी बुक्स है तो आप चेक कर लो, यही एक्सप्रेशन आते हैं, लेकिन सिर्फ 2-3 स्टेप्स में. दिस इज स्टेप 1 व्हाट वी हैव रिटन. उसके बाद थोड़ा सा टेक्नोमेट्री का 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सब किया था हमने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सब डाल के 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा. दैट्स इट. सो दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट इन द एक्स डायरेक्शन. रिपीट लास्ट 3 स्टेप्स 1 2 3. मान लो कि यहां तक क्लियर है. ओके, सो m.2 कैन बी रिटन एज रो टाइम्स q2. ओके, मास फ्लो रेट लिविंग टू सेक्शन 2 इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू डिस्चार्ज टू सेक्शन 2. और डिस्चार्ज टू सेक्शन 2 हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेट किया था. q2 का वैल्यू कितना आते हैं? q/2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आते हैं, करेक्ट. q3 का वैल्यू q/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा आते हैं. सो सब्स्टिट्यूट कर लो. सो इफ आई सब्स्टिट्यूट देन okay, so if you substitute then m dot by 2 v minus u 1 minus cos theta. so is m dot 2 sorry m dot 2 actually. okay, first term I am showing first term. so m dot 2 होता है कि rho q2 v minus u 1 minus cos theta. so rho into q2 का वैल्यू कितना है? q by 2 times 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. so rho q this 2 v minus q 1 plus cos theta into 1 minus cos theta is 1 minus cos square theta actually. so ये क्या होगा? sin square theta होगा बस. so इसलिए this first term got replaced with rho q by 2 v minus u into 1 minus cos square theta. okay, similarly अगर m3 की जगह पे अगर आपने इस एक्सप्रेशन डाल के सिंप्लीफाई किया तो आपको ये एक्सप्रेशन आएगा, दोनों सेम आएगा एक्चुअली. So can we directly write the velocity, relative velocity in formula we derived yesterday? Obviously, इसलिए v minus u आए ना. जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा था RTT में, वहां vr dot n cap dA normally अगर if control volume is moving, here control volume is moving, so ultimately it's v minus u. just a bit of math simplification, that's it. इसमें कुछ fluid mechanics नहीं है, ठीक है, सीधा maths है ना. 1 plus cos theta into 1 minus cos theta, a plus b into a minus b, a square minus b square. yes, fine. अब हम एक चीज कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ द जेट. ओके, ये चीज कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ द जेट एक्चुअली. सो इफ दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लेट, पावर डिलीवर्ड बाय द जेट, पावर डिलीवर्ड बाय द जेट, ये क्या होगा? लुक, व्हेन जेट इज गोइंग एंड हिटिंग द प्लेट, प्लेट इज मूविंग अल्टीमेटली. सो मान लो कि आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी में हमने फोर्स F डाला और इसके वजह से इस बॉडी इज मूविंग विथ मास U. कैन आई से द पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी? कैन आई से पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी? दिस इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. ओके, नॉर्मली इट्स लाइक F डॉट U, बट नॉर्मली लेट्स से इन सिंगल डायमेंशंस नॉर्मली ए होता है कि F डॉट U A होगा. okay, F dot V whatever the relations, but in general when both are along the same line then angle between them is 0, so cos 0 is 1, F into U होता है. मैं यहां एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे, when there is force acting on the body should accelerate, ऐसा हो, क्योंकि बॉडी को एक फाइनाइट मास होगा, so बॉडी एक्सेलरेट होना पड़ेगा. लेकिन why the body is moving with uniform velocity? how can force act on the body but still body can move with uniform velocity? Any idea?
मान लो कि मैंने एक बॉडी पर फोर्स लगा, देन अल्टीमेटली फोर्स शुड एक्सेलरेट द बॉडी, करेक्ट, लेकिन यहाँ फोर्स अप्लाई करने के बाद भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे, ये कैसे होगा? Net force is zero, exactly. Okay, so net force acting on that body is zero. Maybe there could be some other source where there is some friction force or something such that, see, मैंने एक चीज आपको ध्यान से पढ़ता हूं, देखिए, नॉर्मली न्यूटन सेकेंड लॉ ये होता है, करेक्ट। अब नेट सिग्मा एफ, ओके, अब व्हेन दिस इज जीरो, अल्टीमेटली ये भी जीरो होना चाहिए, इसका मतलब नहीं है कि वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर dv by dt is equal to 0, v need not be 0. मान लो कि वेलोसिटी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट डायरेक्शन पे है, तब भी इस डेरिवेटिव 0 होगा पक्का, करेक्ट। वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाट, ओके। अगर वेलोसिटी 0 पे है तो इट्स कॉल्ड अ रेस्ट कंडीशन, बट बॉडी नीड नॉट बी इन रेस्ट, इट कैन मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। सो कांस्टेंट वेलोसिटी, फाइन। सो इसलिए नेट फोर्स 0 है इस पे। देन लेट्स सी, दिस इज 0, पावर डिलीवर्ड बाय द जेट is equal to, since this is moving in this direction, so Fx on plate into velocity of the plate in the x direction. What is the velocity of the plate in the x direction? It is u, correct, क्योंकि plate u velocity in the x direction से भाग रहे, so this is u. Then this velocity is equal to, if you substitute here, rho ये v minus u whole square into sin square theta into u, ये आएगा, correct. So this is the power delivered by the jet to the plate actually, fine. So the power delivered by the jet to the plate is given by this. Normally power ये होता है कि force into velocity dot product, और मान लो कि if you want to calculate the body is actually making the force is actually making the body to move with velocity v, this is the actual way, लेकिन we have directly put fx on plate in the x direction, this is the force acting in x direction, so directly by multiplying velocity in x direction हमको power आ गया, v constant वाला। अच्छा ठीक है, सॉरी अपूर्वा बंसल, लुक हियर, अगर ये 0 होना है तो कांस्टेंट, मतलब v का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों नहीं बदलेगा, ठीक है। v का डायरेक्शन फिक्स्ड है, मैग्नीट्यूड भी फिक्स्ड है, सो देन दिस v इज कांस्टेंट। अल्टीमेटली जब एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होते, सो उस टाइम पे v इज कांस्टेंट, देन अल्टीमेटली v इज कांस्टेंट, dv by dt 0 होगा, फाइन। वही चीज बताया मैंने, v 0 होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर v 0 हुआ तो भी ये डेरिवेटिव 0 होगा, लेकिन इस डेरिवेटिव 0 होने के लिए v 0 होना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। सो दिस इज द पावर। सो अब हम एक चीज कैलकुलेट करते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द जेट, एक्चुअली ये क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ द जेट। Then let's see, efficiency of the jet, ये क्या होगा, power delivered by the jet delivered by the jet to the total energy available with the jet. Okay, here since there is no effect of pressure, हम थोड़ा सा लिखेंगे total kinetic energy available with the jet per basically total kinetic energy rate, let's say, okay, because power is actually work by time, so kinetic energy rate, let's say total kinetic energy rate that is available with the jet. So this implies efficiency of the jet is equal to, हमको कितना आया, हमने कैलकुलेट किया अभी, so rho ये v minus u whole square into sin square theta into u, ये होगा force or the power delivered by the jet, okay, and because of this power the plate is moving, okay. Now अब fluid के पास कितना एनर्जी है, we can see if mass flow it is m, half m dot v square, यही होगा fluid के पास जो एक्चुअल एनर्जी होता है वो, yes or no?
because if per unit time, because kinetic energy per time is nothing but half into m dot into v square is what I can write. Okay, so half m dot v square is the kinetic energy rate of the fluid, kinetic energy per second that is entering the control volume ultimately. I mean not entering the control volume, actually with the jet. Okay, because that's the jet. Then let's see, अगर आपने इस expression को simplify किया तो rho ये v minus u whole square sin square theta, jet is inclined at some angle fixed, so this is u divided by half m dot, so this is completely of the jet. Okay, so rho a v into v square, because मान लो कि एक जेट जाए ऐसे, so इस जेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये और वेलोसिटी v से जाए, so total kinetic energy at any section is half m dot v square, बस इतना है. Okay, so this is the total energy. We should take v or v minus u. This is just for the jet. You are doing analysis only for the jet, so that's why I have taken v square. Understood? We are just looking if there is a jet, how much power is available with the jet. That's all. The impact and all is taken care already. Now we are seeing only what's the power available with the jet. That's only in the kinetic energy form. क्योंकि pressure energy is not useful. सारी जगह पे pressure same है. So there is no conversion of pressure. Potential कुछ नहीं है. So the energy with jet is only kinetic energy. So that's what we are writing. So इसलिए हमको इस expression आएगा. So let's see. हमारे पास ये एक्सप्रेशन है कि 2 sin square theta v minus u whole square into u by v cube. So इसको हम ऐसे लिखेंगे कि efficiency of the jet is equal to 2 times sin square theta into, उस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे 1 minus u by v whole square into u by v, actually here u by v. Fine? Yeah, got it now? So this is the actual expression. अब मान लो कि हमारे पास एक वेलोसिटी v jet है और there is a blades which are rotating. Okay, so let's say for example the blade is actually moving with velocity u. मान लो कि आपके पास अगर u और v को ऑल्टर करने का feasibility है. Okay, क्यों? मान लो कि आपके पास एक प्लेट है, then this plate is moving. Let's say this is connected to some turbo machine wheel, so that this plate is moving with some velocity u. Okay, so that this midpoint, normally if you take, this plate is moving, and ultimately there is a jet which is coming and impacting this. Okay, so इसके वजह से इस turbo machine rotate हो गए. Now let's see, मान लो कि आपके पास एक nozzle है यहाँ और यहाँ valve भी है, एक valve भी है. इस वॉल को ऑपरेट करने से इस V को हम एडजस्ट करते हैं. यस और नो? सिमिलरली इस टर्बाइन को थ्रॉटलिंग करने में इस U को भी हम चेंज कर सकते हैं. होगा V कंट्रोल होगा, U ऑल्सो कंट्रोल होगा. नाउ लेट्स सी व्हाट वुड बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी or what would be the condition such that the jet delivers maximum power for a given kinetic energy of the jet, kinetic energy rate of the jet. Okay, so इसका मतलब at what conditions इस जेट का एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा. सो u इज चेंजेबल, you can be changed, v can also be changed, because in reality this is the situation. So हम एक नया वेरिएबल डिफाइन किया था u by v actually. Okay, so sin theta is fixed क्योंकि इस ब्लेड का एंगल फिक्स है इस जगह पे. So in such case of course here theta also changes because when this blade is actually rotating like this, but मान लो कि theta fixed है. Okay, in general in this analysis case, because varying theta is also make this as 2-dimensional problem, then it ultimately creates problem. Okay, दो वेरिएबल का ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा. सो लेट अस फिक्स थीटा टू मेक द जॉब इजी. सो अगर आप थीटा फिक्स किया तो मान लो कि इस एफिशिएंसी को मैक्सिमम करना पड़ेगा. तो अब हम क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द जेट, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द जेट, for maximum efficiency of the jet, derivative of efficiency of the jet. लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल ये है कि u by v है ना. or else if you feel little hectic in mathematics, you can take this as some x for the time being. Okay, u by v is equal to x, so this is x d efficiency of the jet by dx, क्योंकि x is the variable. Okay, x is the independent variable. So if you differentiate this, 2 sin square theta is constant. So अगर आपने इस टर्म को डिफरेंशिएट किया तो d by dx of 1 minus x whole square into x,
ये है आपके पास, करेक्ट। सो डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन dy by dx ऑफ x इज 1, सो ये होगा 1 प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन into 1 minus 1 is also there, correct, क्योंकि if you differentiate this 1 minus x whole square into 1 plus x into 2 times of 1 minus x into derivative of 1 minus x, एक minus 1 आएगा, so इसलिए एक minus 1 है यहाँ. So let's put this as u by v normal. This is the expression. So अगर maximum या minimum आना है तो first derivative का value कितना होगा, please type in the chat box. मान लो कि एक जगह पे maximum या minimum है, so उस points पे first derivative का value कितना होगा. Come on, type it in the chat box. 0, correct? So 0 आना चाहिए. So this value is equal to 0. लेकिन इस 0 में 2 और sin square theta की जरूरत कुछ नहीं है. They are anyhow constants. So it is, but they are non-zeros. They are 0. If you simplify this expression, let's see. 1 into 1 minus u by v whole square into 1 minus 2 times of u by v into 1 minus u by v is equal to 0. लेकिन इसमें हम एक फैक्टर कॉमन लाएंगे which is like 1 minus u by v times 1 minus u by v minus 2 times of u by v is equal to 0. करेक्ट. अब ये दोनों स्केलर्स है, इस प्रोडक्ट 0 होने के लिए आइदर ये 0 होना पड़ेगा नहीं तो ये 0 होना पड़ेगा, लेकिन ये पक्का 0 नहीं है. क्यों? मान लो कि अगर ये 0 है 1 माइनस यू बाई वी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि u इज इक्वल टू v. अब मान लो fluid jet is moving at velocity v, plate is also moving at velocity u which is equal to v of course in magnitude. Will there be the contact between plate and fluid anytime? मान लो कि u and v मैथमेटिकली इक्वल है, तब is there a possibility that fluid and plate will get in contact? नहीं, करेक्ट. फ्लूइड इंपैक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन प्लेट भगाते हैं. ओके, सो दे विल नेवर मीट. सो इसलिए मैथमेटिकली ये एक सॉल्यूशन है लेकिन फिजिकली ये नहीं होगा. ओके, क्योंकि फिजिकली दिस विल नॉट सपोर्ट द इंपैक्ट ऑफ द जेट ऑन टू द प्लेट. ठीक है, सो इसलिए ये 0 नहीं होगा पक्का. तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास एक ही ऑप्शन ये है कि 1 माइनस यू बाई वी माइनस 2u by v, सो माइनस 3u by v इज इक्वल टू 0. इसका मतलब यह है कि u by v का रेशियो 1/3 होना चाहिए. So this is the condition for maximum efficiency. For maximum efficiency of the jet. For the maximum efficiency of the jet, when this plate is moving with velocity u, ultimately the fluid should also follow such that the fluid velocity is 3 times the jet velocity. Then you can have the maximum power of transmission. कितने लोगों को डाउट है? Because first derivative equal to 0 can give you maximum or minimum. How do you know that u by v is equal to 1/3 is maximum? कितने लोगों को डाउट है? डाउट है क्या किसी को? Why not this can give minimum efficiency? Because first derivative is 0 means it can give maximum or minimum depending upon the second derivative. कितने लोगों को डाउट है ये चीज? How can you 100% say that this is maximum? This is the situation for maximum efficiency. Maximum efficiency. किसी को डाउट है या नहीं? नो. वाई यू हैव डाउट? कनिष्क, नो डाउट. अगर डाउट है तो प्लीज कैलकुलेट सेकंड डेरिवेटिव. ओके, ट्रस्ट मी, मैं सही पढ़ाता हूँ. नॉर्मली ये मैक्सिमम एफिशिएंसी का कंडीशन है. अगर आपको डाउट है तो इसको 1 माइनस एक्स और इसको 1 माइनस 3x ले लो, देन डू द सेकंड डेरिवेटिव, यू विल सी इट्स नेगेटिव, इट्स पॉजिटिव. सी, normally the first derivative is something like 1 minus x into 1 minus 3x, correct? अब इसका वैल्यू क्या होगा? 1 minus x minus 3x minus 4x plus 3x square. एंड आप सबको पता है कि x का वैल्यू 1 से नीचे है, करेक्ट? बिकॉज प्लेट कैनॉट मूव फास्टर देन द जेट अल्टीमेटली. यस और नो? मान लो कि x का वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? u by v is greater than 1. इसका मतलब होगा कि प्लेट
is moving faster than the jet, then no impact. Okay, and also it cannot be negative, both are velocities, it's positives. So 0 less than x less than 1. जब 0 less than x less than 1 होता है, this is the first derivative. If you calculate the differentiation of this, आपको second derivative आएगा -4 plus 6x. okay, and इस जगह पे अगर आपने स्टेशनरी पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया तो -4 plus 6 into 1/3, this is 2. So this is -2, which is negative. So इस point पे second derivative negative. So ultimately the condition for maximum. Okay, yeah, fine. So this is what you have. It is the maximum case. Now let's see. Of course, हाँ mathematically ही prove करना पड़ेगा ना. Second derivative v negative होगा. No, this is what I have shown. Okay, so what is the maximum efficiency for transmission? So therefore eta jet maximum is equal to, so normally eta का expression क्या है, ये है ना, eta jet is equal to 2 sin square theta 1 minus u by v whole square into u by v. So 2 sin square theta 1 minus v u by v whole square into u by v. लेकिन इस वैल्यू हम कहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा, जहां u by v is equal to 1/3, इस जगह पे कैलकुलेट करना पड़ेगा. इफ यू पुट 1/3 here, 2 sin square theta into 1 minus 1/3 whole square, so 2/3 whole square into 1/3. so ये कितना आएगा, 2 into 4 8 by 9 into 3 27 sin square theta. ये होगा मैक्सिमम जेट एफिशिएंसी. मैंने क्यों पढ़ाया ये सारी चीज, एक बार ESC में इस कांस्टेंट का वैल्यू पूछा था. 8/27 sin square theta, ठीक है, लेकिन एक बार ESC में इस 8/27 का वैल्यू पूछा था. ठीक है, सो इसलिए मैंने करके दिखाया. डेविएशन नहीं, थोड़ा सा सिंपल मैथ्स. ओके, मेंस एग्जाम में एक बार किया था, आई थिंक सम टाइम बैक. ओके फाइन. So this is 8/27 and this is because of this simple analysis. You see, इतना दिक्कत नहीं है actually. 3 steps maximum, ये पूरा maths फटाफट किया हमने. So this is 8/27 sin square theta actually. Okay. So अब मान लो कि एक प्लेट है. Okay. So turbine plate is there. Is this clear to all of you? Please type in the chat box. I'll have some water please. Okay. बहुत पढ़ा है हमने. यूपीएससी इज टफ, नॉट टफ एक्चुअली. सी, इस कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो जो बहुत टफ है और लेकिन जो बिल्कुल नहीं आएगा बच्चों को, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है. आसानी कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस से करना पड़ेगा बस. ओके ठीक है. सो उस टाइम पर ट्रैक करना चाहिए बस. एक एक्सप्लेनेशन दे दूं मैं. मेंस कब हुआ इस बार, ESC मेंस किसको याद है, इस बार ESC मेंस कब हुआ? किसको पता है कि ESC मेंस कब हुआ? आई गेस जून 23 हुआ. ठीक है. सो एक चीज मैं दिखाता हूं आपको. पेपर 1 में नॉर्मली फ्लूइड मैकेनिक्स से सब चीज होगा. ठीक है, ठीक है, लोडिंग हो. लेकिन कैन यू टेल अस, कैन यू गिव अस ब्रेक टिल 9 PM? 9 PM इज लाइक हाफ एन आवर ना. इट्स ओके, आई विल एंड बाय 10, सो देन आफ्टर वी कैन कंटिन्यू. ओके, मे बी इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, 10 बजे तक खत्म करता हूँ मैंने. जस्ट 1.5 hour more. ओके फाइन. सो let's see, I'll show you something. So mains exam happened on June 23rd actually, correct? So मैं आपको थोड़ा सा चीज दिखाता हूं. देखिए, ये पेपर है एक्चुअली. ओके, पेपर 1 ऑफ ESC मेंस ऑफ कोर्स. तो सबको पता है कि आप लोगों ने देखा था अभी तक. सो एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इयोलॉजी ऑफ फ्लूइड्स, पहला क्वेश्चन है ना.
मैं एक छोटा सा चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने बहुत दिनों के बाद पढ़ाया इंग्लिश बैचेस में। फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज 3। ओके, सो लेट्स सी। इसमें मैंने पूरा वो इयोलॉजी के बारे में पढ़ाया था। ऑल दिस इज लाइक बेसिक्स, विस्कोसिटी एंड ऑल। सो देखिए, इयोलॉजी, why is called shear thickening, why shear thinning, okay, all these things मैंने दिया था, euphectic, thixotrophic, all these fluids and examples directly. So अगर मान लो कि आपके पास इस नोट्स है तो पक्का आपको इस 8 मार्क्स मिलेगा। दूसरा चीज ये है कि क्लियरली मेंशन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन एंड नेवियर-स्टोक्स, दोनों मैंने पढ़ाया। सो ऑयलर्स इक्वेशन में विस्कस फोर्सेस नहीं आते एंड जब नेवियर-स्टोक्स डेराइव करते हैं उस टाइम पे विस्कस फोर्सेस आते हैं, करेक्ट। Explain the concept of Prandtl mixing length by Prandtl and state the relationship that exists between turbulent shearing stress and mixing length actually. Okay, so turbulent flows में ये है। So turbulent flows पे जाएंगे एक बार। So let's see turbulent flows, concept of Prandtl mixing length and also shearing stress. So अब देखिए, okay, I think one lecture before, so yeah, ठीक है। So this is turbulent flows lecture number 1. So पहला लेक्चर में मैंने डायमेंशनल एनालिसिस का थोड़ा सा छोटा मोटा चीज पढ़ाया मैंने, तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया। इसके बाद टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट किया मैंने यहाँ, ठीक है। सो टर्बुलेंस, इंट्रोडक्शन टू टर्बुलेंस। सो नॉर्मली टर्बुलेंट फ्लो पे फ्लक्चुएशन होते हैं बहुत सारे। सो दिस क्वेश्चन, integration and solving of this question was direct gate question in 2016 actually. Okay, this same question was asked in my university exam in MTech. Of course hota hai. Okay, so this is what you have now. This is like the turbulent shear, outer turbulent region, turbulent shear is dominating. Now अब हम turbulent shear के models पे देखते हैं थोड़ा सा। So turbulent shear stress modeling, this is the Bosniak model of course, and this is the Reynolds model of course. So इस Reynolds model को हमने Prandtl mixing length theory से, so we have defined what is Prandtl mixing length theory we have done, and Reynolds model, the relation for turbulent shear in terms of Prandtl's mixing length we have seen here. Okay, so root tau t turbulent shear by O is equal to L into du by dy, all these things, and we have got the relation. यही relation उन लोगों ने भी पूछा था, okay, ESC में directly. So लेकिन एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ, इस PDFs कब का है? So these PDFs are like February, you can check maybe. So this PDF whatever I have shown differential equations, उस टाइम पे मैथ्स और फ्लूइड मैकेनिक्स दोनों पैरेलली जा रहे, तो इसलिए so मैंने फरवरी में पढ़ाया था ये सब चीज, ओके, मतलब प्रीलिम्स से पहले। सो दिस इज लाइक 16 फरवरी 2024। उसके बाद सो ये क्वेश्चन हम देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, so this is the question what we have solved. Okay, so these 3 questions you can see directly from our notes of course. Okay, then let's see, all this is like basic. Then this question also again we have solved of course for a different velocity profile, this depending on this function we can integrate of course. Okay, then displacement thickness, moment thickness, energy thickness, loss of energy, ये सब basic चीज है, कोई भी fluid mechanics पढ़ाते हैं वो सब पढ़ाते हैं ये चीज। Okay, so I don't want to take anything for this same questions. Okay, Blazius solutions, drag force on boundary layer thickness, ये सब चीज मैंने डेराइव किया था यहाँ boundary layers में। आई विल शो यू boundary layers, external viscous flows. Okay, so external viscous flows में दूसरा पार्ट पे, पहला पार्ट में स्केलिंग एनालिसिस करते हैं मैंने, तो दूसरा पार्ट में ये होता है, ठीक है। सो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन, ये होता है कि स्केलिंग एनालिसिस। ओके, सो यू कैन सी दिस आर द स्केलिंग पैरामीटर्स, मैंने स्केलिंग किया था और स्केलिंग एनालिसिस से कुछ चीज़ों दिखाया मैंने। उसके बाद वी हैव सीन समथिंग लाइक द equation, this boundary layer thickness, all these things, laminar flows. So उसके बाद sine profiles, cos profiles of course, energy loss, energy section. So see, मैंने जनरल एक एक्सप्रेशन डेराइव किया था, y by delta whole power n, इस y by delta को eta से डिनोट करते हैं। So depending on the value of n equal to 0.22 लगा दो, डेल्टा स्टार, डेल्टा डबल स्टार, ये सब चीज़ आएगा आपको। ओके, उसके बाद मैंने बाउंड्री लेयर, दिस बेसिकली वन कमांड्स इंटीग्रल इक्वेशन, मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, इसका डेराइव करके दिखाया था थोड़ा सा फटाफट, बहुत आसान ये चीज़ है। सो इससे हम स्किन फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ये सब चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन। देन उसके बाद ये बहुत आसानी क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर के मतलब थर्मोडायनामिक्स का ये आया था। देन हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन है, संदीप साहब पढ़ाते हैं आपको पक्का। सो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था डायरेक्टली, प्रूव दैट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विस्कस फ्लो बिटवीन 2 पैरेलल
plates, both plates fixed है across a cross section is parabolic in nature. Prove that maximum velocity is equal to 1.5 times the average velocity. मतलब इस फ्लो को कौन सा फ्लो बताते हैं? Can anyone know what is this flow? If you have two fixed plates and if fluid is flowing in between, इस फ्लो को क्या बोलते हैं हम? Coet flow, correct? Is it? Coet is one plate fixed and one plate moving. इसको बोलते हैं कि प्लेन पॉइजली फ्लो. ओके, जब दोनों प्लेट फिक्स्ड होता है इसको बोलते हैं कि प्लेन पॉइजली फ्लो. कोएट फ्लो में एक प्लेट फिक्स्ड होता है और एक प्लेट चलता है. ठीक है, सो नॉर्मली फिर यहां आएंगे थोड़ा सा. सो एक्सटर्नल विस्कस फ्लोस से पहले इंटरनल विस्कस फ्लोस भी है. इंटरनल विस्कस फ्लोस, सो पहला क्लास इंटरनल विस्कस फ्लोस. इस क्लास में जनरली मैं नेवियर-स्टोक्स डेराइव कर सकता हूं. अच्छा, या नॉर्मली कैन सी छोटा मोटा क्वेश्चंस किया मैंने. हाँ, यही नेवियर-स्टोक्स का डेरिवेशन है. ओके, सो नॉर्मली कैन सी देयर इज अ फ्लूइड फ्लोइंग एंड इफ यू टेक स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट एंड इफ यू एनालाइज, आपको स्ट्रेस फील्ड मैट्रिसेस से सब पता चलेगा. फोर्स बैलेंस, सो फोर्स बैलेंस की वजह से आपको ये इक्वेशंस आएगा. दीज आर कॉल्ड द कॉची इक्वेशंस ऑफ कोर्स. ओके, अब स्ट्रेस को हम मॉडल कर सकते हैं इसके अनुसार. हाइड्रोस्टैटिक डेविएटिक ऑल दिस पार्ट्स. सो फाइनली हम यहाँ तक आते हैं कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन तक. So these are the Navier-Stokes equations of course. So this is the Navier-Stokes equation for incompressible flow. अब इस Navier-Stokes equation को हम कोएट फ्लो पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, कोएट फ्लो में क्या होता है? एक प्लेट फिक्स्ड होता है और दूसरा प्लेट मूवेबल होता है. ओके, सो यू कैन सी दिस इज द डेरिवेशन. अगर Navier-Stokes आपको आता है तो बहुत आसान से हो जाएगा ये सारी चीज. So you can see I got the velocity profile. Then alpha equal to, for different values of alpha we have different velocity profiles. When alpha equal to 0 then the velocity profile is linear. इसको बोलते हैं कि simple कोएट फ्लो नॉर्मली. लेकिन when alpha is greater than 1 केसेस डिस्कस किया था मैंने, alpha equal to -3 all these things. So सेकेंड लेक्चर पे जब मैंने सॉल्व किया था, यू कैन सी केयरफुली दीज आर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अल्फा. ये डायग्राम आप लोग बहुत सारे बुक्स में देखते हैं लेकिन किसी को समझ में नहीं आते ये डायग्राम क्यों ऐसा आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इसका मैथमेटिकली और फिजिकली भी. और इसके बाद देखिए प्लेन पॉइजली फ्लो, दोनों प्लेट फिक्स्ड है और दिस इज मूविंग. सो हमने सेम नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन यूज करके डेराइव किया था विद इन टू हैंड राइटिंग्स. यू कैन सी मैंने यहाँ प्रूव किया था वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक. और यहाँ क्वेश्चन क्या है? Prove that the velocity distribution for viscous flow between two parallel plates when both the plates are fixed across a section is parabolic in nature. Exactly, मैंने वही चीज शो किया था इस चीजों में. After doing a bit of simple differential equation analysis, the velocity profile is parabolic. Okay, और maximum velocity कितना है? Exact questions. Okay, direct fluid mech is starting to hit. I'll show you. So now you can see. Next, they have also shown prove that the maximum velocity is equal to 1.5 times the average velocity. So maximum velocity होगा 3/2 times of average velocity. Correct? और एवरेज वेलोसिटी इज 2/3 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी. सो ये चीज़ों करने के बाद यू कैन गेट u average by u max is 2/3 because of this simple analysis. Okay, just if you know the velocity profile, this analysis is like 2/3. So u average is equal to 2/3 times u max. That's what they have asked in the question. So prove that maximum velocity is equal to 1.5 times the average velocity. Okay, is equal to 1.5, not half, 1.5. 1/2 is like 3/2 of course. Okay, got it? 1.5, 1/2 which is 3/2 times the average velocity. Clear? उसके बाद हीट ट्रांसफर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है जिसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. ठीक है, सो नेक्स्ट शो दैट स्ट्रीम लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस फॉर्म ए नेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है, सो स्ट्रीम लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस होता है, सो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सो पोटेंशियल फ्लोस, टर्बुलेंट फ्लोस का थोड़ा सा छोटा मोटा क्वेश्चंस. उसके बाद पोटेंशियल फंक्शंस, वेलोसिटी फंक्शंस एंड ऑल. सो यहां हम देख सकते हैं कि दिस इज फ्लो नेट. ओके, सो आई हैव शोन यू स्लोप्स प्रोडक्ट इज एक्चुअली -1. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट होना है तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज इक्वल टू -1, जो मैंने शो किया था यहाँ. और इसको बोलते हैं कि फ्लो नेट व्हेन स्ट्रीमलाइंस एंड इक्विपोटेंशियल्स आर परपेंडिकुलर एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एंगल्स आर 90. सो ये भी यहाँ क्वेश्चन है डायरेक्टली. सो फ्लूइड मैकेनिक्स से जितना क्वेश्चन आया था सारा डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स आया. आई कैन शो यू एविडेंस. ओके, दिस इज एविडेंस ऑफ कोर्स, क्योंकि मेंस हुआ जून 23 में, लेकिन इस फाइल्स फरवरी 19 जब मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाया था उस टाइम का है. ठीक है, एंड पोटेंशियल फ्लोस में एक अच्छा चीज ये होता है कि डायग्राम्स बहुत अच्छे आते हैं एक्चुअली.
मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा पेजेस में फ्लो नेट्स डेव कर सकते हैं हम. ओके, दीज आर आवर सिंपल फ्लोस. नॉर्मली कल ज़्यादा लोग ने बताया कि वो लोग एक्सी देना पड़े चाहते हैं. सो अगर एक्सी देना है तो ये सब स्ट्रीम लाइन्स. ओके, देन आफ्टर दिस सोर्स सिंक डबलेट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज दिस ऑल आर इन द सिलेबस एक्चुअली. ओके, मैंने एक चीज़ पढ़ा जब मैंने पढ़ाता हूँ एक्चुअली. ओके, उस टाइम पे जब मैंने किसी सब्जेक्ट. ओके, नॉर्मली व्हाट आर द सब्जेक्ट्स आई टीच? फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, मैथ्स, दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स आई टीच जनरली. सो जब मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, until and unless I think I can do justice, I'll never take up a subject. Okay, this is the evidence which I can show you. ठीक है, ऑब्वियसली कवर करना पड़ेगा ना, ये सिलेबस में है. दिखाऊं आपको? ये फिर से लोड नहीं हुआ. ठीक है, छोड़ देंगे इसको. गेट 2025 में मान लो कि अगर आपने एक्सी देना है, टेस्ट पेपर्स एंड सिलेबस. ठीक है, अरे मैंने एक्सी में 4 आया था ना, सो आई नो व्हाट इज द सिलेबस. बिना सिलेबस में कुछ नहीं पढ़ता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट द सिलेबस ऑलरेडी. ये पूरा मैथ्स है, बहुत आसान फन स्टफ. देन हाँ, यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स है ना. सो देखिए, एलिमेंट्री पोटेंशियल फ्लोस, बेसिक पोटेंशियल फ्लोस, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, यूनिफॉर्म फ्लो, सोर्स, सिंक, वर्टेक्स, सुपरपोजिशन ऑफ द फ्लो पास सिंपल ज्योमेट्रीज. मतलब जब आप दो फ्लोस को सुपरपोजिशन करते हैं उस टाइम पे फ्लो पास्ट सिलेंडर, फ्लो पास्ट रोटेटिंग सिलेंडर, ये सब चीज आते हैं. ठीक है, fine. This is very easy stuff actually. If you know this potential flows, the first lecture, at least the first lecture, this is like very dead easy. And to be frank, these complete potential flow lectures are free on YouTube English channel, Gate Wala English channel. Last time I have told when XC exam is very near, so please you can keep this for open access, and it happened. They are for free. You can watch. Fine. So I'll use generally complex numbers क्योंकि complex numbers में analysis करना बहुत आसान होता है. You all know like two things like multiplication, which year you got rank? 2024 में आया था. ठीक है, so 2024 में 4 आया था. ठीक है, लेकिन someone whom I really admire took promise from me that I don't write GATE exam this time. Okay, so मैंने promise किया, so इस बार मैं GATE नहीं लिखता हूँ. ठीक है, so normally using these complex numbers is very simple. Life is very easy if you use complex numbers. Okay, so that's why I teach this potential flows in complex numbers, which is very very easy. Only thing you have to know is multiplication of two complex numbers. बस इतना जानना चाहिए आपको बस. Okay, if you know गेट में गेट एमई का बता दीजिए सर कुछ. एमई में सीधा पोटेंशियल फ्लोस नहीं है, बस उसके अलावा सारी चीज़ है. जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी एनॉल्स ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर आपको आंसर आना चाहिए तो प्लेंटी ऑफ टेक्निक्स, बट गेट होने के बाद मान लो कि आपने इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंटली आंसर करना पड़ेगा तो ये सब चीज़ जानना पड़ेगा. ठीक है, पोटेंशियल फ्लोस नहीं, लेकिन पोटेंशियल फ्लोस थोड़ा सा एक्सी के लिए स्पेशलाइज टॉपिक है, लेकिन उसके अलावा बाकी टॉपिक्स जानना चाहिए. ठीक है, सो ईएससी प्रीलिम्स के बाद छोड़ दो. प्रीलिम्स एनीवन विल से दैट क्वेश्चंस आर मैचिंग ऑल दिस थिंग्स. मेंस में पूरा जो क्वेश्चंस है वो सारा मैच हुआ. ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी कैन डू. और थर्मोडायनेमिक्स में बहुत आसान क्वेश्चंस आए इस बार, हीट ट्रांसफर से भी. चलो, सो आई जस्ट वांट टू टेल यू सम बेसिक आइडिया बिकॉज मेनी पीपल थिंक जब मैंने रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम पढ़ाया, ये फ्लो बिटवीन द प्लेट्स, ये चीज़ मैंने पढ़ाया था, तो लोग समझते हैं कि मैंने मेरा टैलेंट का एक्सपोजर, मतलब आई वॉन्ट टू जस्ट एक्सपोज माई टैलेंट टू गेट सम नाइस कमेंट्स फ्रॉम यू, लेकिन वो नहीं है. ओके, आई एम टीचिंग ओनली सम 30 to 40% ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स व्हाट आई नो टू यू. ओके, बिकॉज गेट में उससे ज़्यादा नहीं मांगेगा पक्का, मुझे पता है. लेकिन आई एम टेलिंग यू, इफ यू हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स, यू कैन प्ले विद द इंटरव्यू पैनल्स. मैंने आईआईटी मद्रास में एमटेक क्रैक किया था, आईआईटी मद्रास में पीएचडी क्रैक किया था, एचपीसीएल क्रैक किया था, बीआरसी द टफेस्ट टेक्निकल इंटरव्यू मैंने फोड़ दिया. ओके, बाकी सारे इंटरव्यूज भी क्लियर किया मैंने. ठीक है, ये नोट्स गेट के लिए था या फिर ईएससी मेंस के लिए? टू बी फ्रैंक, ईएससी में और गेट में सिलेबस वेरिएशन उतना ज़्यादा नहीं है. फ्लूइड मैकेनिक्स में हार्डली 5% और 6% है बस. अगर मान लो कि आपके डाउट है तो मैं आपके सामने प्रूव करता हूँ. ये भी गेट 2025 पेपर्स एंड सिलेबस मैंने खुल के दिखाता हूँ, और ईएससी प्रीलिम्स का भी दिखाता हूँ. एक मिनट, ईएससी, हाँ यूपीएससी ईएससी 2024 प्रीलिम्स,
इसमें सिलेबस होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। मैंने एक्सी नहीं खोला है, मैकेनिकल खोला हूँ एक बार। सो फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके। सो यही है फ्लूइड मैकेनिक्स। अब इस पे आइए, दिस ईएससी, ओके। तो लास्ट में एग्जाम में सिलेबस होगा 23rd पेज और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर। हाँ, यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर 1 सिलेबस, फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, manometry, fluid statics, buoyancy, equation of motion, Bernoulli's equation and applications, viscous flow of incompressible fluids, laminar and turbulent flows, flow through pipes and head losses in pipes। इतना ही है मैकेनिकल सिलेबस में, ओके। अब मैकेनिकल की गेट सिलेबस पे आइए। फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, फ्लूइड स्टैटिक्स, force on submerged bodies, hydrostatic forces and buoyancy, basically control volume analysis of mass, momentum and energy, इसको बोलते हैं कि Reynolds transport theorem, fluid acceleration, differential equations of continuity and momentum, Bernoulli's dimensional analysis, viscous flow of incompressible fluids। जब incompressible fluids का viscous flow होता है, then ultimately we can when you write for viscous flow of incompressible fluids, ultimately Navier-Stokes equation is what we do, and from Navier-Stokes equation you can do all these things, okay। Then boundary layer, elementary turbulent flow, flow through pipes, bends, fittings, all these things, basics of compressible flow। Can you find any difference in the syllabus? एक डॉक्यूमेंट है गेट सिलेबस और दूसरा डॉक्यूमेंट है कि ईएससी का सिलेबस। Can you find any big significant difference? नहीं है ना? मुझे एक चीज बता दीजिए, ईएससी है सिंपल सिलेबस है ना? टू बी फ्रैंक, ऑनेस्टली यस, टू बी वेरी प्रिसाइज। बट गेट में सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन गेट में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता है ना, वो ऑलमोस्ट मतलब बहुत प्रेडिक्टेड आता है, मतलब सेम पैटर्न आता है हर बार। आई विल टेल यू वन थिंग, मान लो कि आपने फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ाया है ना, दिस अ पाइप, इफ फ्लूइड इज फ्लोइंग, इसको एनालाइज करने के लिए बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में, आग के बंसल में भी ऐसे देते हैं, यू टेक स्मॉल सेक्शन ऑफ रेडियस आर, you take a small section of radius r actually here, so a small strip of section radius r। so अब लोग लिखते हैं कि यहाँ प्रेशर pr plus dou by dou x pr into, or this is pz, whatever the pressure at this point, I don't know whether they take z or x, I am habituated to take z। so this pressure balance is what they'll apply, then the shear force balance, they'll apply this pressure and inertia balances and they'll show you the answer, okay। but I am telling you one thing, in this they'll tell you pressure acting here is pz, correct, or p, whatever, if this is p then this is p plus dou by dou z, dou p by dou z into dz, this is what they write, okay। if this length is dz, normally this is the z direction of the flow, this is what they write। then can someone tell me why there is no pressure variation in radial direction? मतलब ये दोनों जगह पे प्रेशर का डिफरेंस है क्योंकि dz बहुत स्मॉल है, लेकिन इस दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस r है, तो why the pressure is not same here and here at these two points? किसी को पता है? This question was actually asked in Bark in me to me, okay। can someone tell me why there is no pressure difference here between these two points? Anyone? Seriously, बार्क ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, हाइट डिफरेंस, तो हाइट डिफरेंस होना है तो प्रेशर डिफरेंस भी होना चाहिए ना अल्टीमेटली। पास्कल, नॉर्मली नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से हमने प्रूव कर सकते हैं कि डो पी बाय डो आर 0 आएगा, देयर इज नो प्रेशर ग्रेडियंट इन द रेडियल डायरेक्शन, वी कैन शो दिस मैथमेटिकली। नॉर्मली जब मैं पढ़ाता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स तब दिखाता हूँ एक्चुअली, which you can see, महायूजन्स हुआ था उस टाइम पे, गेट है ना, सो यू कैन सी हियर, जब हम देखिए ये है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशंस पोलर कोऑर्डिनेट्स में, सो एक्सिस-सिमेट्रिक पाइप, okay, so when there is a pipe in the z direction, if you apply this momentum in the radial direction, see you can see
momentum in the r direction, in the radial direction, theta direction and z direction. So in the r direction, you can see by neglecting certain things, dou p by dou r is 0. So the radially pressure is not changing. Okay, Pascal's law is valid only when the fluid is static. यहाँ fluid static नहीं है, fluid जा रहे with certain velocity. Okay, Pascal's law tells you in a static fluid, pressure is same at a point in all the directions. Okay, that's what Pascal's law. Pascal's law, what does it tell you? At a point in a static fluid, the pressure is uniform in all the directions. This is what Pascal's law tells you. It never tell you pressure is same between two different points. है ना? That's not Pascal's law. अगर दो different points पे pressure same है तो in a static fluid we never have to study fluid statics chapter. Pressure and its measurement है ना? Fluid statics. Dou p by dou z is equal to rho z z actually. Okay, dou p by dou z is equal to minus rho z z. If there is no pressure variation with height, then ultimately dou p by dou z is 0. No need to study fluid statics chapter. Okay. Dou p by dou r is equal to 0 is not exactly assumption. It's a very reasonable thing which can be happen. Shear stress should be 0 in fluid to apply Pascal's law. Yes, but here fluid is moving and shear stress is not 0. Okay. चलो ये सब थोड़ा सा basic चीज़ है, important. Normally in interviews if they ask you, otherwise you'll get standing on the dais and they'll corner you like anything. They'll play with you. ठीक है. So चलिए यहाँ तक हुआ था. So अब हम जाएंगे angular momentum पर. Okay. So start होगा हमारा turbo machinery actually to be frank. हाइड्रोस्टैटिक लॉ भी अप्लाई नहीं हो सकता फ्लूइड मोशन में. Yes, obviously they have shear force basically. Okay, whenever there is no shear force only you can apply Pascal's law. Okay, these things are important. चलो, so let's see angular momentum. So सबको पता है angular momentum क्या होगा. मान लो कि आपके पास एक डिस्क है. Okay, now you take a small particle of mass m, and if this particle is moving with a velocity v, let's say in some direction, if this particle is moving in some direction with some velocity v actually, then what is angular momentum? आपका कंटिन्यूस क्लास नहीं होगा, एक्चुअली नहीं होगा क्योंकि जब नॉर्मली इस टर्बो मशीन्स भी शिवम सर लेना, एक्चुअली शिवम सर would have taken this class but due to some scheduled class he was not able to take, so they asked me but the time was less. I think fluids and शिवम सर ने fluid mechanics बहुत पढ़ाया आपको, so I think there was slight delay in the schedule, so there was like the time was not sufficient, so we were planning some class on Sundays. Okay, लेकिन इस हफ्ते मैं थोड़ा सा छुट्टी पे होता हूँ, so there was some class after this class. There is next class on 26th August or something as far as I remember. ठीक है, so let's see, this is momentum. So what is angular momentum? You know, angular momentum, it's a vector of course. Angular momentum normally लोग L से denote करते हैं. So this is basically moment of the linear momentum. Correct? This cross product is basically depend on the right hand thumb rule, of course. Sorry, right hand thumb rule. So let's see if this is the axis of rotation. If this is the axis of rotation, then मान लो कि एक radial vector है आपके पास. So this is the radial vector because it's a disk. So at any point from this center line, it is a radius. So whenever this velocity is in direction, this momentum is also in this direction. Correct? Because you know linear momentum P is equal to mv. If two vectors are equal, their direction should be same ultimately. So जो डायरेक्शन पे वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन पे लीनियर मोमेंटम भी होते हैं. ओके, सो r cos v, so if you take r and if you curl your fingers towards the velocity line, then ultimately it's in this direction. So angular momentum is about this axis. Okay, so this is angular momentum. So momentum of linear momentum, of course. Okay, so this is momentum or moment of linear momentum. ये आएगा पक्का. Okay, so moment of linear momentum actually. Now you observe something in Reynolds transport theorem. You know, dp by dt of the system is equal to
dou by dou t this is the angular moment, I mean the Reynolds transport theorem actually. Now if you take something like B is equal to angular momentum, because mass is just a scalar, you can take out of the things. Okay, so mass is just a scalar. Okay, you can bring out. Normally if you are doing cross product of two vectors, if there is some constant multiplication to any vector, you can bring out, right? Like you know, A cos alpha B can be written as alpha times A cos B, you know this. Okay, simple basic. So mass is constant, you put it out, no issue. Then in this case beta क्या होगा? Beta is equal to B by M. So ये होगा कि R cross VR actually here. Okay, so this is the value you have. Normally things are relative velocities always. Okay, because control volume need not be stationary, it can move. So if you have this relative velocity here, because this control volume can move in general. So when you have this expression, then beta is equal to R cos VR. Okay, in such case, if you apply here, d by dt of B is angular momentum of the system, which is the fluid particles. You know, these are of fluid particles because I have told you system is the set of fluid particles. So this is system. Dou by dou t of this, dou by dou t of R cross V over dV plus integral over the control surface R cross V times, this is m dot of course. Okay, this term whatever you have seen, I know this is the small mass which is cutting the control surface at this condition. So okay, fine, let's write this as dm dot for the time being. Okay, because you know this whatever the expression I have over v dot n cap dA, this is the small amount of mass which is cutting the control surface at any given point. Now if you take steady state for example, okay, so steady state, then the partial derivative term with respect to time will fly away. Okay, then what is this? Is angular momentum, rate of change d by dt is nothing but rate, the total derivative, rate of change of that, this is the substantial derivative of course, which you might have seen in fluid dynamic kinematics. So d by dt of this quantity, which is rate of change of angular momentum of a system. What does rate of change of angular momentum of a body equal to? Any idea? If you have some mass, rate of change of angular momentum of this mass, rate of change of linear momentum is equal to force, net force acting on the body. Rate of change of angular momentum acting on the body is equal to what? Engineering mechanics, Apurv sir might have taught you. Torque, correct? So this is net torque acting on the body. So ye hoga net torque. Torque is also a vector, okay, because cross product. So torque is a vector which you might have seen in all your courses on system. Net torque acting on the system is equal to, now again like in the previous case how I have broken this integral into two parts, like all inlets and all outlets, then ultimately this v dot n becomes positive at all outlets and it becomes negative at all inlets. So let's write this as this is what you have. Okay, so at all these places sorry, at all these places you can see at all this complete integral, this integral makes contact takes into consideration all points where fluid is cutting the control surface. Okay, so this all points where fluid is cutting the control surface, we split them into two parts, all outlets as one part and all inlets as one part. We have seen at all outlets this term is positive, at all inlets v dot n is negative. Last class में हमने देखा था. So इसलिए we can write this equation as sigma acting on fluid is equal to, we can write this as summation m dot out into r cross v actually, okay, r cross vr at outlet minus summation m dot in r cross vr at inlet. Now I want to ask you something guys, look carefully.
What is the angle between radius and tangent? If you have a circle, normally मान लो कि आपके पास सर्कुलर पाथ है, एक पॉइंट पे टेंजेंट है और रेडियस भी है, इस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90, करेक्ट? इस दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, करेक्ट? सो दिस इज 90. So vi is not radial component of velocity, it's the relative velocity. Okay, so this angle is 90. ये सबको पता है ना? Okay, if you know this, then the job is done. Very simple. Look, if you do tangential direction, so I'll ask you one more question. मान लो कि आपके पास एक डिस्क है, okay? So there is a disk which I am intentionally putting it very narrow, maybe something like this. So मान लो कि आपके पास एक डिस्क है, फाइन, दिस इज द डिस्क यू हैव. तो ये होता है कि डिस्क, ए डिस्क normally. Now if you have this disk, now let's say fluid is going and making impact at some location, at some radius. So let's say the fluid is going and making impact at some location, at some radius r. So let's say at some radius r, this fluid is going and impacting this wheel. Now normally if you take any fluid in Cartesian, if you take a velocity vector, you can write vx I cap, vy j cap plus vz k cap. Okay, fine, that's okay. Can you write this v as, similarly in the radial components and these directions, if you denote v theta e theta cap, vz ez cap. Now can someone tell me, out of these three components, radial component, theta tangential, and also z axial component, because if a fluid is coming normally, it has, if a fluid is coming and hitting it at this point, let's say at some radius r, then it has got some radial component, some tangential component, or basically, you know, there is some tangential component and also axial component. You have z is the this axis direction normally, then radius r and theta directions. Okay, now out of these three velocities, the momentum, or the moment of which momentum, basically when the velocities are in theta, you can what do you say, you can resolve this velocity into three parts: radial, tangential and axial components. Ultimately momentum vector can also be resolved into radial, tangential and also theta components. When you do this cross product, similarly the resulting vector can also be dissipated into three parts, which is like vr, v theta and vz. Now out of these three things, tell me which momentum components will help for the rotation of this wheel. I hope you all have understood the question, right? There are three components of momentum which have same moment, of course, because all these three are at the same point. Vr, v theta, vz, all these are at the same point. Total mass is at the same point. So moment of which component, radial, tangential or axial, which actually rotates this wheel? Which actually rotates the wheel? Tangential component, correct? Tangential component rotates the wheel actually. Look, I'll show you with the help of a bottle, maybe you can understand. So मान लो कि ये आपकी टर्बो मशीन का wheel है, ठीक है? So this is a wheel and it has a vane, something like this. Now this is the axial direction, this is the radial direction towards the radius, and this is the tangential direction. Now if I apply axial force, if I start pressing this bottle, will this cap rotates? Yes? Please tell me, please type in the chat box. If I start applying the axial direction force like this, if I start applying the axial direction force, how much I can apply? Will this cap rotate? No. If I apply radial direction, so let's say I am pushing this very hard, is this cap rotating? No. But if I apply tangential load, so let's say if I have tangential load actually here, okay, so let's say if I have tangential load and if I rotate, then ultimately this cap will rotate, correct? So moment of linear momentum is 0, that's why, right? अरे बॉटल का कैप इतना टाइट डाला मैंने, ठीक है? तो ओ कुछ पानी भी है, so पियेंगे so that flow won't get damaged. So now if I apply tangential load, then ultimately, so you know, this is axial direction, this is radial direction, and this is the tangential direction, okay? So if you apply tangential direction and if you rotate, you can see the wheel is getting rotated, okay? So tangential component is what which plays the very important role. And normally in fluid mechanics idea,
we denote this v theta with vw actually here. Okay, so vw is what you have. Now if you do the cross product of these two vectors, let's say if you have er e theta ez are the unit vectors in 3 directions. Okay, then r can be written as r into er cap, correct? Because if you have a radial vector like this, let's say this is r bar, then ultimately the radial vector can be written as magnitude into the unit vector in this direction. And velocity has the directions, a radial component vw e theta cap plus vz ez cap actually here. Okay, you have these components. If you do the cross product of these two, let's see what happens. R cross v is equal to, you know, er e theta e cap e ez, then you have r 0 0, then v is vr vw vz actually here. Okay, so this is what you get. Now if you try to if you try to take this cross product of the two vectors like this, it's cross product, not divergence, curl, nothing. Okay, just you know how to take cross product of two vectors if two vectors are given. Then ultimately this gives you er cap times 0 minus 0, nothing, e theta cap times minus e theta cap times r into vz minus 0 into vr, so which is 0 of course. So this is what you have, plus ez cap times of, there is also axial impact, so r into v omega, I mean v r into v tangential, sorry, here I have made some mistake, r into vz plus this. Okay, yeah, so this is r cos v. So what is r cos v? About this axis. So if you take about this axis ez, which is about this axis, the rotation is actually equal to r into vw is what you get. Okay, normally simple vector cross product if you do, then this ez rotation about this z axis is given by r times v omega. Okay, so which means if you resolve this vector, this is a vector equation, you know, torque is vector, ultimately this cross product gives you vector, this is vector. So resolving above equation in tangential in z direction, equation in z direction, in z direction. So what does this tell you? Net torque acting on fluid about z axis. So if torque is acting about z axis, ultimately disc rotates, correct? That's what it should know. So ultimately if torque is acting about z axis, so let's say if there is torque something like this which is about z axis, then ultimately wheel rotates. Okay, so what is the z component here? R into omega. So we can write this as summation m dot into r times v omega at outlet minus summation m dot r times v omega at inlet actually here. Okay, so this is the z component resolution of the vector equation actually. Got it? Is this clear to all of you till this point? Yes or no? Is this clear to all of you? Did you all understand? If you do cross product of this r cos v, this is the vector what you have. So if you write these expressions here and here for r cos v at inlet and outlet, then if you resolve this complete equation in the z direction about the z axis, this is the equation what you get. Yes or no? Because r cos v has a tangential component of r into v omega. Got it? Yes or no? Please type in the chat box. Yeah? Yes or no? Please type it in the chat box. See. Okay, I'm repeating. Look, please see carefully. I want this r cos v. So v is normally denoted as in this. Please don't confuse between this vr and vr. Okay, this is relative velocity. This is just a component of velocity in the radial direction. Okay. So yeah, I'm giving quickly. So see here. This v can be written as vr er cap plus v theta is denoted as vw, so tangential velocity, vw e theta cap plus vz ez cap. Okay, then and radius vector can be written as r into er cap. I have done the cross product of these two because I want r cos v I have done. So if you do the cross product, this is what you get. Okay, so ultimately in the radial direction there is nothing, and in the theta direction you have this component, and in the z direction we have this. So what does this cross product tells you? Cross product tells you this is the component about theta axis, this is the component about z axis. Okay, so if you resolve this, see, I can write this sigma t as sigma t about x axis or about radial axis
plus sigma t theta about e theta axis plus sigma tz about ez axis. Actually, I can write it. Okay. Similarly, I can replace these fellows with this vector minus e theta cap r dot vz plus ez cap r dot vw minus e theta r vz plus ez times r into vw. Now, from this, since these two are vector equations, if two vectors are equal, their corresponding component should be same. So, if I equate the torque about the z-axis component, means if I equate this ez component and ez component on both the sides of the equation, I'll end up with this equation. Yes or no? You know now, like let's say if you have a1i plus b1j is equal to a2i plus b2j. If I write this, then ultimately you know a1 should be same as a2 and b1 should be same as b2, correct? So because likewise I have equated the ez components on both sides of the equation, I've got this. See, okay, I'll explain. I'll write one more step. Maybe you'll feel difficulty if I write directly this. Look, this equation is okay to all of you, yes or no? Is this equation okay to all of you? Okay, I'll go step by step. Fine. ये equation सही लगा आप सबको? Please type it in the chat box. Yes or no? Please type it in the chat box. Fine. If this equation is fine, can I replace this r cos v with this expressions? Because r cos v at any point is actually given by this. Yes or no? If it is at this point, then we'll substitute the radius as that particular values and velocities at that particular location. If you maybe take the point somewhere here, then we'll put the radius at that point and the velocities at that point. So at any given point, this r cos v can be written as this. Okay. Now if I substitute there, look what I'm doing. Sigma tr er cap, torque acting about the radial axis, torque acting about the theta axis, torque acting about the z axis is equal to summation m dot r cos v. So r cos v can be written as minus e theta cap r vz plus ez cap r v omega. I mean r vw tangential component at outlets minus summation m dot minus e theta cap r vz plus ez cap times r v omega at outlet. At inlet. Okay, so this is at inlet. So if you compare both sides of the equation, you will understand this torque acting in the radial direction is 0. Ultimately, torque acts in the radial direction is 0 because a radial direction and if velocity both are radial, angle between them is 0. So r cos v becomes 0. Of course, it's a known fact physically also that the torque acting in the radial direction is always 0. The reason being, when if there is no torque in the radial direction, of course, because r cos v is actually 0. If you do r cos v radial velocity component, then ultimately you know this can be written as r times er cap cross vr er cap. These two are scalars, you take them out, r vr into er cross er. So cross product of two vectors is 0. The same vector, the cross product of a vector with itself will be always 0 because both will be in the same direction, angle between them is 0. So that's why there is no torque in the radial direction. You all know this. Okay, so this term is 0 because you can see there is no component of er cap on the right hand side, okay, to equate. So ultimately if you equate, tr has to be 0. If you equate tz component, let's see, torque acting about the z axis on the fluid, okay, because this is completely Reynolds transport theorem on fluid is equal to, if you equate theta components from this, what you'll get, z components, okay, about z axis is what we are doing. So if you equate z components, there is one z component here which is sigma m dot r v omega, this combination at the outlet, minus there is one more z component here, sigma m dot r v omega at inlet. This is what you have, and this equation is same as this equation. Okay. What about the torque in radial and tangential direction? In radial direction it's purely 0 because of this, okay, and in theta direction you have a very small torque in general, this, which is Vz, of course. Fine, which makes the disc to rotate. So this is the torque. ये जो टॉर्क होता है ये रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, डिस्क को रोटेट करने के लिए. सो दिस इज सेम एज दिस, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट
सम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आपको पता है ना, दो वेक्टर्स दिया तो कैसे क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप सबको आता है, किसी को नहीं आता है क्या? दो वेक्टर्स दिया तो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेशन करना नहीं आता है, सबको आता है ना, वही चीज किया मैंने। ओके and this torque is responsible, torque acting about the z axis is responsible for the rotation of the disk. Okay, फाइन, यहां तक सबको क्लियर है या नहीं? सर एक बार रैपिड कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए। फाइन, ये जो एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो इस दोनों वेक्टर्स का कंपोनेंट्स इक्वल होना चाहिए। सो अल्टीमेटली have equated them, that's it। अब सबको पता है ना, मान लो कि दो वेक्टर्स है आपके पास और ये दोनों वेक्टर्स इक्वल है, तो तब क्या होगा? कंपोनेंट्स इक्वल होगा ना दोनों का, सेम चीज। फाइन, नाउ लेट्स सी if you know this, then I'm erasing this, it is just a bit of simple math, but I hope you understand normally, ये बहुत आसानी चीज है। So let's see, now I want to ask one thing, this torque is, this implies sigma t on disk or on machine, whatever, on disk, let's say, or on what can we say, on disk, let's say for example there is a disk which is acting on z direction, is equal to minus of sigma t on fluid in the z direction. So ultimately this is what you have, correct? So this is what you have ultimately, because जब fluid और डिस्क दोनों कांटेक्ट पे आते हैं, जो टॉर्क फ्लूइड डिस्क के ऊपर लगाते हैं, सेम टॉर्क फ्लूइड भी आई मीन डिस्क भी फ्लूइड के ऊपर लगाते हैं, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, करेक्ट? बिकॉज दीज टू आर इन contact, Newton's third law should be valid. So ultimately every action has a equal and opposite reaction. So if fluid is trying to exert some torque on the disk, disk भी उतना torque fluid पे exert होने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन opposite sense में, so इसलिए एक माइनस साइन, ठीक है? Now let's see, this implies sigma t on disk in the z direction, which is about the axis of rotation, minus of this quantity which is sigma m dot r v w at inlet minus summation m dot r v w at outlet. ओके, अब एक चीज इंपॉर्टेंटली देखिए, आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज break मिलेगा, I'll end the class in next half an hour kind of thing, okay? So don't worry, because I understand this content is actually hectic a bit, so we'll not teach for 4 hours. मुझे भी पता है, अगर 4 घंटे मैंने सीधा ये सब पढ़ाया तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा आप लोगों का, ठीक है? So I'll maybe stop within next 40 minutes sort of thing, okay? So don't worry, क्योंकि बीच में अगर एक 25 मिनट्स 30 मिनट्स ब्रेक दिया तो कंटिन्यूटी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है? So let's see. Do anyone know the name of this equation? What is the name of this equation actually? Or torque acting on the disk. Now, if you want to see power delivered by the fluid to the disk is equal to, so how do you calculate this power? Ultimately sigma t z on disk, torque acting on the disk which is causing the rotation in the z direction of course, into about the z axis into omega, because सबको पता है कि power equal to torque into omega, okay? So power is equal to torque into omega, सबको पता है ना? So मान लो कि आपकी डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, okay? Then torque into omega, so normally t dot omega, both are vectors, so because it's not always necessary that t dot omega होना चाहिए, so ultimately this is what you have. So let's see, actually I would have shown this also in vectors, but since many people are silent, I'm doing in component wise. Actually vectors में करना बहुत आसान है, okay? If you know vector addition, vector
dot product and cross product. Okay, but I've stepped down to scalars. You see, this is a scalar equation. Okay, so I have stepped down to scalars because many of you are actually trying. Because I would have shown disk normally ऐसे rotate होना चाहिए. Okay, ऐसे नहीं होना चाहिए. Means disk should not evolve about the theta axis. If disk is evolving about theta axis, it's like, see, I'll show you an example. Maybe I'll take this ID card. There's a fun zone card with me. I generally go for fun zones and play at free time. So मान लो कि ये आपकी disk है. So इस disk मान लो कि ये z axis है इसके centroid. So if this disk is like this, then about this axis this disk should rotate like this. Okay, it's not like this disk should rotate something like this. Okay, if this is the shaft and if you mount the disk, this is the disk. Okay, of course make it circular. So if you put the axis here and if this disk is rotating like this, it's fine. But so this is the rotation about the z axis, axial direction, and so this is the rotation about the z axis. But if disk is rotating about theta or radial directions, so disk rotation about radial direction is something like this folding. Okay, which is dangerous. Turbine blades will break. Similarly, rotation about theta axis. So let's say if this disk is rotating about some theta, then also it's issue. The only thing is this disk has to rotate like this. And if you do t dot omega, angular velocity vector, means this should have angular velocity only about theta axis. If you do this dot product with theta direction, if you do, sorry, about the z axis, so if you do the dot product with z direction, the dot product of this vector with z direction will only keep this component. That's why only power delivered by the fluid depends only on this dz. Okay, so whatever, let's not go for vectors. Life अभी तक बहुत मुश्किल हुआ. So let's see, P is equal to, अब मान लो कि ओमेगा से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सिग्मा m dot r vw at the inlet minus summation m dot r v omega at the outlet. Okay, so this is at the outlet. So when you do this into omega, can I bring this omega inside? Because this is just a scalar multiplication. Of course, in this case, it's a scalar. So can you multiply omega here and here actually? Yes or no? Can you delete this omega here? Okay, let me write it. This is what you have. Now, at any point, so let's say at any point on the disk, basically fluid can impact the disk on multiple points. So basically, let's see, if you draw a perfect view like this, front view of the disk, then this is the z axis, which you cannot see, of course, in this case. So मान लो कि disk ऐसे rotate हो रहा है at some angular velocity omega because of impact of fluids at different locations. So मान लो कि fluid यहाँ एक inlet है, यहाँ एक in है, okay, और यहाँ से एक outlets है, all these things. In these cases, at any point, मान लो कि ये होगा radius, and radius into omega gives you the linear velocity of this point. Yes or no? Correct? At any location, r into omega gives you the linear velocity of the point actually. Yeah? Correct? Yes or no? R into omega. I'll ask you one more point. Please answer carefully. मान लो कि आपने एक टर्बाइन लिया था. Okay? From this expression, for turbines, this is power delivered by the fluid to the disk. Okay? So turbines में क्या होता है? Fluid जाके टर्बाइन को पावर देते हैं. Correct? Sir, please do not rub anything related to the concept, even if it's easy. Okay, for notes purpose. Okay, I got it. So मान लो कि आपने एक टर्बाइन लिया था. Okay, टर्बाइन में जब प्रेशर की जरूरत है सब पढ़ते हैं. Normally there are few turbines where we impact at single point and fluid comes out at same point at the same radius, like normally Pelton wheels and all. But मान लो कि आपने प्रेशर एनर्जी का यूसेज लेना है. Okay, so तब क्या करते हैं? In case of turbines, मान लो कि एक सिंगल इनलेट है, सिंगल आउटलेट है, फ्लूइड जाते हैं वेन्स टू ग्लाइड करके बाहर आते हैं. ओके, नॉर्मली इफ यू टेक ए टर्बाइन इन एक्चुअल केस, मान लो कि आपके पास वेन्स है. ओके,
ऐसे वेन्स है. ओके, सो अल्टीमेटली ये वाला रोटेट होते हैं. So when fluid hits at one radius, let's say it's entering to it and coming out to this, there is a Francis runner, for example, in average. In turbines, power is delivered by the fluid to the disc or by the disc to the plate. In turbines में क्या होता है, fluid में जो energy होता है वो disc को transfer होता है, correct? In case like pumps, compressors, ये सब चीजों में क्या होता है, जो power disc के साथ होते हैं वो fluid को transfer होता है, correct? So fluid to disc होता है. अगर इन केस ऑफ टर्बाइन्स फ्लूइड टू डिस्क ट्रांसफर होना है तो P पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है. देखिए P इज पावर डिलीवर्ड बाय द फ्लूइड टू द डिस्क. ओके, सो इन केस ऑफ टर्बाइन्स P पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है. ये P का एक्सप्रेशन है ना, पावर डिलीवर्ड बाय द फ्लूइड टू द डिस्क. सो P पॉजिटिव होना है या नेगेटिव होना है इसमें. पॉजिटिव, करेक्ट. सो पॉजिटिव होना है. सो P शुड बी पॉजिटिव. अब एक चीज बताइए, अगर P पॉजिटिव होना है तो इन दोनों चीजों में इफ यू टेक R इनलेट एंड R आउटलेट, R inlet and R outlet normally in case of reaction machines I am talking. We'll see what is impulse reaction, basic terminologies भी पढ़ाता हूं उस टाइम पे. Can someone tell me if P has to be positive, to make P positive you want to transfer as much as energy possible, correct है ना. So हम fluid को कितना पावर पॉसिबल होगा उतना पावर देना पड़ेगा डिस्क को लिए. Then out of this R radius at inlet and radius outlet, ये दोनों में कौन ज्यादा होने की जरूरत है नॉर्मली. रेडियस एट इनलेट एंड रेडियस एट आउटलेट. मान लो कि आपने सोचा है एक टर्बो मशीन डिजाइन करने के लिए, ओके, इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा. अगर इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा तो विच इज ए फेवरिंग कंडीशन, रेडियस एट इनलेट इज मोर और रेडियस एट आउटलेट इज मोर. ये पॉजिटिव होना चाहिए टर्बाइन के लिए. ओके, सो इनलेट इज ग्रेटर देन आउटलेट, करेक्ट. yes or no? So radius at inlet should be ultimately greater than radius at outlet. Inlet should be more, correct. ये पॉइंट्स आपको समझ में आए. अब आप देखिए किसी भी टर्बाइन पे फ्रांसिस रनर ऐसे एक टर्बाइन लिया तो अल्टीमेटली इनलेट ज्यादा रेडियस पे होता है, एग्जिट कम रेडियस पे होता है, करेक्ट. अगर मान लो कि आपने फ्रांसिस रनर लिया था, फ्रांसिस रनर में क्या होता है, fluid enters like this, it hits the plate it hits the turbine at some radius which is this radius R inlet. लेकिन fluid जब बाहर निकलते हैं, so there is a small opening here, so fluid goes out at a small radius, so R in is definitely greater than R out in case of reaction turbines. Got it? क्यों? ये P को पॉजिटिव करना पड़ेगा. Got it? है ना. Now if you take the case of pumps or compressors, power consuming devices. For pumps or compressors, any power consumption things, okay, fans, blowers, ये सब चीजों में you can see P is negative and ultimately radius at inlet is less than radius at outlet. So pump में क्या होता है, fluid अंदर से जाते हैं, मतलब shaft accordingly axially flow होता है और radially इस जगह से fluid बाहर आता है at higher radius. Opposite होगा. In axial turbines we'll see axial turbines also come under the reaction turbines, but in that case of course we have axial any case of turbines. In axial turbines the effect of VW would be small, but this mass flow rates are very high actually. Okay, we'll see axial turbines deal with very high mass flow rates, so in such cases rather than this radius the mass flow rate term keeps dominating so much, so that's why there's no much impact. So we treat that inlet and exit are at same points. Okay, even in case of Pelton wheel we'll see that inlet and exit are at same radius actually. Okay, yeah, is this clear to all of you? Outlet is greater than inlet for pump because P is negative in that case. Machine will deliver energy to the fluid. Got it? Is this clear to all of you? Did you all understand why I was teaching in-house transport theorem then slowly building up all these things? Because to reach this point in angular momentum. Axial turbines में ये m dot deciding होगा. Okay, m dot will be very large in general. In axial flow turbines the mass flow rate that flows is very tremendous normally. मान लो कि अगर आपने किसी aircraft is normally like axial flow, you can see the to the compressor the fluid enters axially almost, so in such case the flow rates are very high. Okay, so the power difference and all will come because of this mass flow rates.
ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ रेडियस. एनीवे विल सी समथिंग इंटरेस्टिंग हियर. फॉर a single inlet and single outlet turbine, single outlet hydraulic machine, क्योंकि अब हम पॉजिटिव नेगेटिव्स ये सब की बात नहीं करेंगे अभी. सो P इज इक्वल टू, मान लो कि आपके पास एक ही इनलेट है, सो समेशन होगा एक ही टर्म, m डॉट इनलेट और m डॉट इनलेट VW एट इनलेट इंटू R into omega, so R into omega at inlet minus m dot outlet VW outlet into R omega outlet actually here. अब एक चीज मुझे बताइए आप लोग, this R into W is the linear velocity, so इसको हम U से डिनोट कर सकते हैं. So at any given point this is U is the velocity, okay, the tangential velocity of the disk at that point, disk velocity, okay, tangential velocity of the disk. यहां भी u out. इस एक्सप्रेशन हमको आया जब हमने स्टडी स्टेट एनालिसिस कर रहे, करेक्ट. सो इस पहला टर्म को हमने 0 दिया, सो इसलिए हमको ये एक्सप्रेशन मिला था, करेक्ट. यस और नो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. इस एक्सप्रेशन हमको क्यों मिला, क्योंकि हमने स्टडी स्टेट एनालिसिस ले रहे, सो इसलिए डो बाय डोटी टर्म को हमने 0 दिया, correct. Now if it is steady state and it has single input and single output, can someone tell me first steady state, of course it is steady state, for steady state m dot in and m dot out, ये दोनों क्या होगा? Can anyone tell me? Net weight of mass inside the control volume. मान लो कि आपकी डिस्क की कंट्रोल वॉल्यूम, क्योंकि डिस्क if you just draw a control volume which insert disk in it, so अल्टीमेटली जो लोकेशन पे फ्लूइड और डिस्क कॉन्टैक्ट पे आ रहे, सो वो लोकेशन उस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर आएगा पक्का. सो m डॉट इन एंड m डॉट आउट, ये दोनों क्या होगा? इफ इट स्टडी स्टेट इक्वल होगा, करेक्ट. सो दे आर इक्वल, बढ़िया. ओके, सो लेट्स से दिस इज m डॉट. सो पावर ये आएगा कि m डॉट टाइम्स VW1 और VW इनलेट U inlet minus VW outlet into U outlet, means tangential component of velocity at the inlet into linear velocity of the disk at the point where fluid is coming. Product of this is equal to this. Okay, so this is mass flow rate. Now what we see, you observe one thing, power by mass flow rate, इसका dimension क्या होगा? Power is what? What is like something like okay, what is something like this, kg per second. Then when you put this second to the top, watt into second gives you kilojoule per kg. इसका dimensions क्या होगा? Look, kilojoule is okay, joule per gram, let's say, kilo gets cancelled, or joule per kg is what you can say, no issue, joule per kg. Joule का units क्या होता है? Joule energy, so energy is force into displacement, so force Newton into displacement per kg. अब न्यूटन क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन kg एक्चुअली, करेक्ट. यही आएगा हमको, यस और नो. फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर बाई kg ऑफ कोर्स, करेक्ट. सो अगर आपने kg से डिवाइड किया, हमको आएगा कि मीटर इंटू मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. तो एक चीज हम यहां कहेंगे, लेट्स डिसाइड समथिंग लाइक हेड डिलीवर्ड by the fluid to the jet or to the disk is equal to capital H, which is P divided by, let's say, m dot times G. This is unit weight flow rate. So power delivered to the disk per unit weight flow, not mass flow, weight flow of the fluid is equal to, so मान लो कि आपने m dot g से डिवाइड किया इसको, so आपको आएगा v dot vw into u at the inlet minus vw into u at the outlet divided by 2g actually, divided by 2
g actually here. Okay, so this is the head. So ultimately if you divide this with g, मान लो कि यहाँ एक g लगाया आपने, so 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आएगा. so ये सारी जगह पे 1 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आएगा. so इसका डायमेंशन होगा मीटर्स. okay, so this is basically some head which we see. so therefore head delivered, you can see here, head delivered by fluid to the disk or to the object whatever is in contact is equal to h, which is vw into u at inlet minus vw into u at outlet divided by this 2 is not there, sorry, 2 is not there, only g is there, by g actually here. so this is what you have actually. is this clear to all of you or not? 2 आएगा, 2 नहीं ना, 2 नहीं है, so सिर्फ g है बस. so this is g of course. so this equation whatever you have is called, 2 नहीं है ना पक्का, 2 नहीं है. so this equation is called, किसी को नाम पता है इस equation का नाम क्या है? the governing equation for any turbo machine. you take turbine, pump, compressor, anything, this is the equation which is the head transaction between the fluid and the body actually. किसी को पता है इसका नाम क्या है? yes, no? Euler's equation. fantastic. so this is called Euler's equation for turbo machines. okay, normally इस क्वेश्चन XC में आया था 2024 में गेट में. I'll just show you again. so just one thing, it's a easy thing to show. 2024 का पेपर्स, engineering sciences XC. wait, I'll show you. control F Reynolds. you can see here AXE है, you can see engineering sciences fluid mechanics का क्वेश्चन है ये सब. okay, derivatives, all these things, aeofectic. okay, so fluid mechanics XCB questions 22 to 30 carry 1 mark each. I hope you can see now. so अगर आपने इस क्वेश्चन पे गए तो you can see this question. मान लो कि इस क्वेश्चन आया है. so गेट 2024 का पेपर से निकला इस क्वेश्चन. let r, v and m be the position vector, velocity vector and mass respectively in a control mass system. which one of the following properties is considered should be conserved extensive property in Reynolds transport theorem to obtain angular momentum equation? वही angular momentum equation which is the Euler's equation. this is also called as angular momentum equation of course. angular momentum equation. so अब बता दीजिए इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा क्वांटिटी लेना है? ऑयलर्स इक्वेशन लेने के लिए इस कैपिटल बी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कैपिटल बी को कौन सा वाला प्रॉपर्टी लेना है? ऑप्शन टाइप कीजिए. कम ऑन गाइस क्विकली. हम कैपिटल बी को कौन सा वाला प्रॉपर्टी लिया था इसमें एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन को दिखाने के लिए? बी, कैपिटल बी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, करेक्ट? सो कैपिटल बी, ये करेक्ट. कैपिटल बी एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट इंटेंसिव. इंटेंसिव इज पर यूनिट मास. सो जब हम मास से डिवाइड किया था एम गॉट कैंसिल्ड. लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा वाला है इसमें? आर कॉस एम वी है ना? यस और नो? आर कॉस एम वी लिया था हमने. यस, एक्सी का सिलेबस में टर्बो मशीनरी नहीं है.
इसलिए मैं जब कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस पढ़ाता हूँ उस टाइम पे रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम पढ़ाता हूँ और रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम में ये सब चीज़ सॉल्व करता हूँ, ठीक है, फाइन। तो ठीक है, थोड़ा सा फोकस दे दो इस सारी चीज़ों पर, ठीक है। अब लेट्स सॉल्व कर लो। दिस इज H, okay, so head delivered. Now let us try to understand something. You have this VW. So how this VW can be written actually, okay? So let's see this. Let's understand that case. VW into U. So वो चीज़ जानने के लिए हमने velocity triangles के बारे में देखेंगे, ठीक है। So एक बार velocity triangles देख लेंगे हम लोग। velocity triangles। अब देखिए, आपके पास एक टर्बाइन है और एनी कंप्रेसर पंप एनीथिंग, एक टर्बो मशीन है आपके पास, ओके। सो बीच में यहाँ शाफ्ट है, सो जिससे आप रोटर को फिक्स किया था। तो दिस इज द रोटर और डिस्क नॉर्मली। आप इसके ऊपर बहुत सारा ब्लेड्स होगा, करेक्ट, ऐसे। तो नॉर्मली दिस बेल्ट ऑन व्हील एंड नॉर्मली ब्लेड्स ऐसा भी होता है कि जब रोटर ऐसा होता है शाफ्ट से फिक्स होता है। ऑफ कोर्स विल ड्रॉ द डायग्राम्स इन मच डिटेल्ड सेंस मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो ऐसे एक व्हील है, ठीक है। ये फ्रांसिस टर्बाइन में पढ़ेंगे अभी। नमस्ते। These all are basics, okay? You will see जब मैंने ये सारा फंडामेंटल्स बेल्ट ऑन व्हील, फ्रांसिस अंडर, एक्सियल फ्लो मशीन्स, ये सब में सेम थिंग्स कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारा फंडामेंटल्स है किसी भी टर्बो मशीन के लिए। उसके बाद पंप्स, कंप्रेसर्स, किसी भी चाहिए तो, ओके। नाउ लेट्स सी। सर अभी तो 2.5 घंटे हुए हैं। अच्छा, normally what is the time you can, I don't know, because generally when I take Paracom classes in English batch, I take 7 to 11 single stage 4 hours, okay? So ठीक है, 10 बजे पर खत्म करेंगे, okay? No issue. Let's see, because this is very easy thing, okay? Velocity triangles इतना complicated नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है? So let's see. Up to 11, yeah, single stage 7 to 11, 4 hours एक ही स्टेज में। कभी नहीं लिया क्लास ऐसे? But लेकिन I understand many of you are seeing this for the first time. I understand. So we'll end at 10 o'clock. No issue. Okay. We'll focus on the next class. Of course, we can spend so many classes. No issues. Okay. On Sundays. So let's see when we have velocity triangles. अब यहां से एक ब्लेड पिक कर लो, एक ब्लेड पिक कर लो यहां से, ठीक है। एक ब्लेड पिक कर लो यहां से। सो जब आप एक ब्लेड पिक कर सकते हैं, आई एम वेरी बैड एट इट समटाइम्स, ओके। फाइन। So let's say there is a blade something like this, okay? So fluid is going and hitting it. This is one blade of the machine, okay? So when there is one blade, of course, so first let us focus on this tip. Let us focus on this tip and मान लो कि ये सारा blade इस डायरेक्शन पे जाए, क्योंकि मैंने बताया था आपको this angle of the blade is fixed is what we are telling at inlet and outlets, okay? Otherwise if you change theta then the problem becomes more and more complicated, which we need CFD to solve, okay, which we are not doing right now. So when you have this blade, it has some inlet angle. This blade is trying to move with some velocity u, let's say, okay? This blade is some, or else let's say this is this tip is trying to move at some velocity, this tip is also trying to move at some velocity in this direction, u1 or u inlet, and this is, let's say the fluid is leaving out after getting in contact with the blade by passing through the channel, something like this. So मान लो कि यहां blade का angle है, so I'll look at something, look here, inlet. So inlet में the blade is something like this, let's say
the blade is something like, so I am focusing only on the small part because fluid यहाँ impact हो रहा है, so I am focusing on the small region. Okay, so इस जगह पे मैंने focus कर रहा हूँ, so इसलिए इस blade पे इस जगह पे मैं focus कर रहा हूँ. ठीक है, so if you have this blade inlet, then this blade has ultimately some velocity. This tip will be moving in this direction at some velocity u1, let's say, or u inlet. Now when fluid is trying to come and impact this, okay, let's say this angle of the blade, means it's a guide angle, so ultimately it is the blade angle at the inlet. So let's say this angle hoga theta. So this angle is alpha, let's say. Okay, this angle is alpha, for example, or theta, whatever. What you are familiar? Nothing? Can I use anything? Okay, so let's say this angle is theta. The blade inlet angle is theta. So theta is the blade inlet angle. When theta is blade inlet angle, मान लो कि एक fluid आ रहा है. Okay, so a fluid is coming to impact this blade at this point. Okay, एक fluid v velocity से, so मान लो कि इसका velocity है capital V. So ultimately V1 or V inlet. So V inlet से आए इसको impact करने के लिए at an angle alpha with x axis. I mean with the flat direction. Okay, with the tangential direction. क्योंकि ये direction होगा आपकी tangential direction, correct ना? मान लो कि मैंने इस direction पे resolve कर रहा है, so ये होगा tangent इस disc का. So this flat horizontal direction will be the actual tangential direction to the wheel. Okay, so this is tangential direction. Then ultimately जब फ्लूइड इस प्लेट को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं उस टाइम पे इस ब्लेड इस तरफ से u इन वेलोसिटी से जा रहे हैं. ओके, सो इट्स अ फ्री वेक्टर, आई कैन मूव इट हियर. सो मान लो कि दिस इज u इनलेट, सो दिस इज u इनलेट, द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट इन द x डायरेक्शन. सो इफ दिस इज वेलोसिटी ऑफ द प्लेट इन दिस डायरेक्शन, सो मान लो कि अब रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा. रिलेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं? लुक, रिलेटिव वेलोसिटी आएगा ऐसे. So this is the relative velocity, correct? So इसको बोलते हैं कि v relative at the inlet. क्यों? आप सबको पता है, अगर आपको absolute velocity of the jet कैलकुलेट करना है तो relative velocity plus this ये आएगा, ऐसा हो ना? So इसलिए this v should be the like the vector addition of u and vr actually, correct? ये सबको पता है ना? Velocity of a body, if a body b is moving at some velocity and this is relative velocity of a with respect to b, then the vector addition of these two will give the absolute velocity of object a, correct? Yes or no? This is velocity of body b and this is velocity of a with respect to b, then ultimately this vector addition will give you the actual velocity of a. पढ़ा mechanics में? Simple kinematics, particle kinematics, that's it. Okay, nothing very complicated stuff. Now let's see, this is VR at inlet. Okay, मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ. मे बी द सेम कॉन्सेप्ट, आई यूज द सेम टर्मिनोलॉजीज, लेकिन आप थोड़ा सा सेम डायग्राम में बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. कुछ एरेज मत करना, कुछ स्ट्राइकिंग मत करना आप लोग. फाइन, तो इसको हम यहां लिखेंगे. तो दिस इज u, वेलोसिटी u, this is u, fine. Okay, so this is the direction. Now let's see, this is v1 which is known to you, this is u1 or inlet. Okay, inlet, let's say I am denoting with condition 1. Okay, so this is u1, then ultimately ये होगा v relative velocity 1 at 1. Okay, and as I told you, this angle is alpha and this angle is theta. Okay, this is the relative angle at which fluid is moving. Oh sorry, I think this angle I have told you as theta. Okay, so this is the blade inlet angle, or this is the tangential angle, of course. At 1 minute, I have done some small thing here. Let's keep this to be u, because by default this velocity angles has to satisfy. So this is u, of course, this is u,
then ultimately this is VR1, the relative at which it enters. Correct. Now it's fine. This is U1 and this is VR1 actually. Okay, because if this is the angle, then the relative of the fluid with respect to blade would be this velocity vector. Okay, so this is what you have. This is U1 and this is VR1. It is this angle. So this angle you call it as theta for the time being, and this is alpha. Okay, then what you can do, this is the actual velocity which is trying to enter the fluid. It has two components. What are the two components? अब हम इस चीज को velocity v को दो तरफ स्प्लिट करेंगे ऐसे. सो यू कैन सी ये होगा आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट. सो दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट, क्योंकि मैंने बताया ऑलरेडी दिस डायरेक्शन इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन. ओके, सो टेंजेंशियल कंपोनेंट इज VW1 एंड देन अल्टीमेटली ये जो परपेंडिकुलर होता है ये होता है कि रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. सो दिस इज VF1. Normally the radial component is denoted with VF. So this is the inlet triangle actually. Okay, and ये expression always valid होगा. So let's say this is V minus U. Okay, so I'm just writing it here. V is equal to VR plus U actually here. Okay, now what can I do? This VR is important because whatever the velocity fluid tries to come, because of the movement of the blade tip, ultimately there is certain angular, that certain relative velocity that always come. Okay, so VR1 is equal to V1 minus U1. अब एक चीज बताइए, मान लो कि आपके पास एक वेक्टर ये है. So if you want to calculate magnitude of this, how do you do? Root of A dot A. Can I do this? Yes or no? करेक्ट. एक वेक्टर है आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो अगर मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसी के साथ एंड टेक द स्क्वायर रूट. करेक्ट, ऐसा कर सकता है क्या? नहीं. प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. व्हाई आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स, आई विल टेल यू द रीजन. जस्ट सम 10 minutes, 5 minutes maximum. Okay, is this clear? Yes or no? Please type in the chat box. Yeah. So अब देखिए, so this implies VR1 dot VR1 is equal to V1 minus U1. 1 is basically for inlet. Okay, ये होगा. Now dot product of two vectors you can do. Let's see. So VR1 dot VR1 gives you VR1 square, magnitude of this. Correct, magnitude square. Now if you multiply this, first we'll get, I'm doing slowly, look, V1 dot V1 minus U1 dot V1 minus V1 dot U1 minus into minus plus U1 dot U1 actually here. So this is what you have. Okay, so now since dot product is commutative, basically A dot B और B dot A दोनों सेम ही है. So इसके वजह से, and पहले ये होता है कि V1 square, correct, and ये होता है कि U1 square, and ये दोनों होता है कि same terms. So VR1 square is equal to V1 square plus U1 square minus 2 times of, because U1 dot V1 or V1 dot U1, dot product is commutative, you can do in any order, but cross product is not commutative. Okay, I hope you know. So if you do the dot product, you have magnitude of U1 which is U1, magnitude of V1 which is V1 into angle between U and V. So what is the angle between U and V? Alpha. Okay, so cos alpha. Correct, ये आएगा आपको. Yes or no? Please type in the chat box. 2 U1 V1 cos alpha. Correct. Yes or no? Please type in the chat box. VR1 square is equal to V1 square plus U1 square minus 2 U1 V1 cos alpha. Correct. अब एक चीज ध्यान से बताओ, V1 cos alpha क्या होगा? किसी को पता है? Can something you can comment from this? What is VF? VF is the component in the radial direction. This V you are splitting into tangential direction and radial direction. That's it. Okay, so what is V1 cos alpha from this triangle? V1 is magnitude of this vector, so magnitude of V1 cos alpha.
ये बी सी, ओके, ये रेक्टेंगल है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस, टोटल बेस ए सी बाई ए बी, and AC length is VW1 tangential component, this is V1, so V1 cos alpha is equal to VW1 actually, करेक्ट, ये होगा VW1। इससे हम एक चीज लिखेंगे कि when you write this VW1, see VR1 square is equal to V1 square plus U1 square minus 2U1 VW1, or you can write this VW1 U1, anything is fine, VW1 U1 actually here। अब देखिए what is VW1 U1 from this, VW1 U1 is equal to 1 by 2 times of V1 square plus U1 square minus VR1 square, करेक्ट, ये आपको पता है, यस। सो हम क्यों इस एक्सप्रेशन लिखा था, बिकॉज V1 इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द जेट, करेक्ट, जो जेट का वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी है वो V1 है। मान लो कि आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क पता है और पॉइंट का रेडियस भी पता है, U1 कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, एंड नोइंग सम एंगल्स यू कैन कैलकुलेट VW1, सिंपल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से एंगल्स पता है तो VR1 का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट। सो दिस इज VW1 U1। सिमिलरली एट एग्जिट, at exit you can just try by taking some angles. At exit VW2 U2 is same as 1 by 2 times of V2 square plus U2 square minus VR2 square, ये आएगा, okay, the same thing, the same analysis if you do, like at the exit basically इस triangle उल्टा होगा but same mathematical analysis valid होगा, and then you'll get this, ओके। नाउ व्हाई इतना मेहनत करके मैंने वेलोसिटी ट्रायंगल से डेराइव किया था, लुक आई विल टेल यू समथिंग। देयरफॉर हेड डिलीवर्ड टू द रोटर is equal to 1 by G, or let's say VW1 U1 minus VW2 U2, inlet is 1, outlet is 2 by G, okay, that's what I have seen, 2 at point 2 of course, okay। Then if you do this, H is equal to VW1 U1 की जगह पे हम इस एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाफ टाइम्स ऑफ V1 square plus U1 square minus VR1 square minus half times of V2 square plus U2 square minus VR2 square divided by G actually. This can be written as, if you split it, H is equal to, I can write this as V1 square minus V2 square by 2G plus U1 square minus U2 square by 2G plus VR2 square minus VR1 square by 2G actually. This is the actual expression. Now I want to ask you something very carefully. This is normally called, this term which is here is called change in static head. This term whichever you have here, ये पूरा चीज इसको हम लिखेंगे कि change in pressure और basically dynamic head। Because look, मान लो कि आपके पास एक फ्लूइड मशीन है, ठीक है, it has inlet and it also has some outlet at this point. Let's say the fluid is going inside and falling into the tube, draft tube or whatever you have, we'll see it is outlet। अब जब फ्लूइड एंटर होते हैं, फ्लूइड के पास थोड़ा सा एनर्जी होता है, जब फ्लूइड एग्जिट होता है उस टाइम पे भी फ्लूइड के पास थोड़ा एनर्जी होता है, ठीक है।
लेकिन कुछ लॉसेस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। जो एनर्जी डिफरेंस होता है इनलेट और आउटलेट के बीच में, जो एनर्जी डिफरेंस होता है, उसी एनर्जी फ्लूइड ने डिस्क को देते हैं। यस, बिकॉज एनर्जी 1, एनर्जी एट इनलेट, energy at inlet minus energy at outlet is equal to energy supplied to disk. Correct? Will you all agree with me if I write this? Yes or no? Please type in the chat box. Will you all agree with me if I write this? Yes or no? वो दोनों पॉइंट्स के डिफरेंस क्या होगा? एनर्जी ऑफ द फ्लूइड सेम विल बी द डिफरेंस, सेम विल बी द हेड विच इज सेम विल बी द एनर्जी विच इज सप्लाइड टू द फ्लूइड एक्चुअली। ओके, अब इस दोनों का डिफरेंस क्या होगा? लुक, इफ यू राइट इन टर्म्स ऑफ वेट्स, ओके, यू कैन हैव हेड इन minus head out, total energy in terms of head. If you write, this is H which is delivered to the disk, capital H. So H in क्या होगा? P1 by OG plus V1 square by 2Z plus Z1 minus P2 by OG plus V2 square by 2Z, because no friction, nothing, Z2, ये डिफरेंस होगा H. ओके, अब neglecting potential heads कुछ different, we are taking potential heads to be neglected which are very small of course, means basically height elevation difference and all in a turbine. within a turbine में ऐसा नहीं होगा कि एक इनलेट फ्लोर पे होता है, एग्जिट ऊपर फ्लोर पे होता है, ऐसा नहीं होगा ना, नॉर्मली सेम फ्लोर पे होता है ऐसे. सो इन दिस केस इफ यू नेग्लेक्ट पोटेंशियल हेड्स, H इज इक्वल टू, मान लो कि इस टर्म और इस टर्म को हमने सेपरेट लिया था, यही आएगा आपको, करेक्ट. सो इफ यू कंपेयर दिस टू इक्वेशंस, यहां जो पार्ट होता है, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रेशर change, or this is in pressure head actually. Can I say E total is equal to E in plus E out? Yeah, plus energy supplied to the total energy that is involved with the fluid, total energy at the inlet of the fluid, this is equal to E out plus energy supplied to the water actually, because if this minus goes here it is plus, and obviously यहाँ fluid के पास जो energy होता है वो energy सिर्फ दो parts में चलता है, एक exit और एक to the disk, बस. ओके, एंड इफ यू कंपेयर दिस टू, सबको पता चलेगा कि इस येलो बॉक्स में मैंने जो टर्म लिखा था वो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, करेक्ट. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द चेंज इन डायनेमिक हेड और स्टैटिक हेड, एंड यहां से इंपल्स और रिएक्शन प्रिंसिपल्स का एक सॉलिड फंडामेंटल बेस स्टार्ट होता है. ठीक है, डिड यू ऑल गेट दिस? व्हेन कंप्लीट एनर्जी अवेलेबल एट द फ्लूइड इनलेट इज only kinetic energy, we call it as impulse machines, and when the energy available is also pressure energy, we call that as reaction machines actually. Okay, so we define something like the degree of reaction actually here in this case. Okay, so fine. So fluids enough for, so that's enough for today. Okay, fine. Okay, I'll stop. But this is the expression which I'll start in the next class, and I'll apply this expression and this expression to Pelton wheel to do all the things, to Francis wheel to do all the things again, also to Kaplan turbine to do all the things, and after that next weeks also to do compressors and pumps we'll do this. Okay, because अब तक मैंने किसी एजम्पशन नहीं लिया कि ये पंप है, टर्बाइन है, कंप्रेसर है, कुछ एक्सप्लेनेशन और कुछ एजम्पशन नहीं लिया था अभी तक. ठीक है, सो दिस एनालिसिस जो हम कर रहे वो पूरा टर्बो मशीन्स के जनरल एनालिसिस कर रहे हमने. ठीक है, सो विद दैट विल डू डायमेंशनल एनालिसिस कर दूं अभी. बकिंघम बाय द वे टेक्स अराउंड सम 30 minutes टू शो ऑल दिस थिंग्स. और आज यहां तक बहुत हो गया ऑलरेडी. रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम, ऑल दिस थिंग्स. इट्स ओके, आई विल डू डायमेंशनल एनालिसिस नेक्स्ट टाइम, नो इश्यूज. ओके, fine, because I understand everyone should get benefited out of this batch. It's not like only some very high performing people should get benefited, nothing like that. ठीक है, if you want I can keep teaching, because normally ये 3 hours पढ़ाने के लिए मैंने कुछ नहीं देखता हूँ actually. okay,
पूरा मेन नोट्स यहाँ है, सो आई कैन टीच दिस फ्लूइड फॉर हावर्स एंड आवर्स, बट अगेन आई अंडरस्टैंड लोड ज़्यादा हुआ आप लोगों को, करेक्ट। बट सारे चीज़ों का हर एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है या नहीं इस क्लास पे? आज मेरा सैचुरेशन आ गई है अब या ऑफ कोर्स, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स को पहला बार एक्सप्लेनेशन मिल रहा है आप लोगों का, है ना। सो मैं यही चीज़ फॉलो कर सकता हूँ। नॉर्मली जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ हर एक पॉइंट का माइन्यूट एक्सप्लेनेशन उतना क्लैरिटी पे देता हूँ, ठीक है। एंड उस क्लैरिटी देने पे किसी को दिक्कत है तो प्लीज़ टेल मी, ओके। तो वी स्टार्टेड विथ आरटीटी अप्लाई टू। एक होमवर्क देता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश कर लो। दो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था आपको, ठीक है। एक होगा वो लीनियर टैंक्स का दो होल्स है, सो व्हाट इज द d1 by d2 समथिंग। सेकंड क्वेश्चन, ओके। एक लॉन्च स्प्रिंकलर है, सो व्हाट आर द नॉलेज आई हैव गिवन यू कैन सॉल्व इजीली। So when this is rotating, the steady state rotation rate in evolutions per minute for theta equal to 40. Okay, so theta is 40. So this is theta basically. So this is theta. हर एक जगह पे all the three arms it has 40. So you can start. तब आपको इतना सब याद कैसे रहता है? I use this daily in my life. Okay, I do a lot of CFD. Okay, I do a lot of finite volume methods, gate techniques, multi-gate techniques, all these things I keep doing every day in and day out. So it's a common thing. Okay, normally if I ask you, ABCDs are 26, how can you remember? You remember them because you use them daily. Same story. Heat transfer, fluid mechanics, demo. Daily, day in and day out I use these things, so याद होता है. Okay. Fine. So ठीक है. So as per your request we'll stop here for today. इस क्वेश्चन में होमवर्क है एक्चुअली, कोशिश कर लो, हो जाएगा आराम से. I think this diagram is very weak, but you can solve. I hope you can see this in a PDF, not on a board maybe, but in PDF you can see all the dimensions. So nice explanation. Thank you. So okay, you can send maybe this as you are habituated. I think some heart symbol as you wish maybe. Okay. So this will deal maybe in next classes. Pelton wheel तक सोचा मैंने, ठीक है, होता है कभी कभी ऐसे. So we have applied for extensive property B is equal to, we have seen this gives Euler's equation और उसके बाद head delivered. Okay, so head delivered by fluid to rotor or disc, whatever you say. H is equal to VW into U at inlet minus VW into U, tangential component of velocity, into U at outlet, divided by G. और इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे, टू माइनस वन. हाँ, यहाँ 2 - 1 आएगा. दीज आर द पॉइंट्स. ओके, सो अगले लेक्चर से यहाँ से पिक करेंगे हम, ठीक है. सर क्लास नहीं है हाइड्रोलिक मशीन्स का, या इट्स नॉट देयर. द नेक्स्ट क्लास इज ऑन सम संडे एक्चुअली. ओके, something like that. Fine. Okay then, so thank you. Maybe we'll stop here as per your request. DPP maybe I'll upload sometime in the next couple of weeks. Okay, maybe that can be done. No, not next couple of weeks, next couple of days, sorry. Yeah, okay, we can do that. Fine. If you have any doubts, recorded lectures फिर से देखो. As I told you, my Telegram channel and all, you can ask even there. Okay, वो दोनों 3 questions मैंने दिया था, so solve कर लो. Okay, fine then. Thank you all. Take care. Bye. Good night.